2011 की फरवरी में असला था सर। माइक म्यूट है, दीपेन माइक म्यूट है, डॉक्टर दीपेन। Very warm good morning to all of you. Kavita madam has joined, and I can see all the intellects and the various members of IIC and different attendees have already connected to the this online inaugural program of workshop. And I can see respected Vice Chancellor has also joined. I'm waiting for our Vice Chancellor. And just once he will join, and very soon we will start this inaugural program of this workshop.
Dr. Dipen, I think we shall start. I think so, our Vice Chancellor will join shortly. Meanwhile, we are just initiating the inaugural function of this 2 days workshop. So I formally welcome you in this 2 days online workshop, which is being organized by Institution Innovation Council of Pandit Ravi Shankar Shukla in joint collaboration with Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Awadh. And this is, we are fortunate that such an renowned university has joined hand together with us to organize this workshop. The topic of this workshop is empowering innovation, prototype, process design and development with a focus on elderly care reminder system. This is very specific, and this workshop is organized with a view to give outline to our students that how an innovative idea can be converted into a workshop, and how this can be converted into a business model. So this is one approach what continuously we are making effort in this direction, that Innovation Council should inculcate a culture of, or can make a environment and ecosystem with among the students and teachers of this institute and university, so that they can convert their own projects, own ideas ultimately into a very successful project, which can be transferred to the industry, or they can be itself, then they can become an innovator and entrepreneur. So again, I welcome you all in this inaugural session. Most humbly, I welcome the Professor Pratibha Goyal, a dynamic Vice Chancellor of Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University. In her leadership, we have seen the transformation of the university, and we are very hopeful that what we have collaborated with her definitely going to contribute to us also. So very warm welcome to you, ma'am. I also welcome Professor Sachidanand Shukla, Vice Chancellor Pandit Ravi Shankar Shukla University, a dynamic leader, and what I always used to say, that he always motivate and give pace to the activities, and he has also motivated us to do that, though it was IIC was formed long back, but in what pace we are working under the leadership of Kavita and Dr. Kavita ma'am, it can be visible with all the effort what we have made in the last 6 months. So welcome, sir. I also welcome today's speaker, Mr. Hani Durga Prasad Tiwari. He is also an innovator, graduate, engineering graduate, and having a very full of ideas and innovation and energy. And I'm sure that what the talk he is going to share with our student is going to contribute to them, and they will it will motivate to all of us. I also welcome Dr. Geetika Srivastav, from which she is coordinator, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University. So welcome, ma'am, in this inaugural session. I also welcome all the members of IIC Pandit Ravi Shankar Shukla University, the coordinators, the different head of departments who have connected to us, and most important, dear students. So I welcome you all in this inaugural session. So I'm starting with, I'm inviting Dr. Kavita Thakur madam to give the welcome address for this about this workshop. Madam, please. Okay. Good morning to all of you. We welcome all of you to the inaugural function of 2 days online workshop, Empowering Innovation, Prototype, Process Design and Development with a focus on elderly reminder system, organized by Institute of Innovation Council, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur, and Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya. It's my privilege to welcome eminent speaker Dr. Hani Durga Prasad Tiwari, Chief Technical Officer, INKOR Technology, Raipur, to this workshop. His inspiring presence long way to make this event a success. We also extend out warm welcome to Honorable Vice Chancellor Professor Sachidanand Shukla, a great and never exhausting source of inspiration. Welcome, sir. Heartily welcome to Honorable Vice Chancellor Professor Pratibha Goyal, Madam, Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, constant and most exciting source of inspiration. Welcome, Madam.
We also welcome registrars of both the organizing university for their support, for their kind support. Welcome both of you. We also welcome Dr. Geetika Srivastav, Ram Manohar Lohia, Awadh University, Ayodhya, professors of both the universities present over here in this virtual platform, eminent scientists, academician, industrialists, all present over here. Heartily welcome to all of them. And backbone of this workshop, that is, dear participants. This workshop is unique in the sense that Dr. Durga Prasad Tiwari ji has taken a solution from the society, elderly care, a problem from the society, elderly care. He has requested me to give all the 5 sessions of workshop to him because he would like to train the student or participants starting from problem domain, understanding the needs, conceptualization and ideation, then prototyping, very important part, user testing and feedback, then refinement and ideation, lastly implementation or deployment. Therefore, all the participants are requested to be ready with their laptops or laptops in share mode with Wi-Fi enabled. So our journey towards empowering innovation in elder care begins today itself through collaborative efforts, creativity, and a relentless dedication to our mission. We will design and develop reminder system that to revolutionize the way we care elderly population. Together, let us embrace the challenge, seize the opportunity, and make a meaningful difference in the life of others. Thank you very much to all of you present over here. Thank you. Special thanks to Honorable Vice Chancellor Professor Pratibha Goyal Madam, Professor Sachidanand Shukla Sir, because you Thank you. You are the great source of inspiration for us. Thank you very much, sir, madam. Thank you, Kavita ma'am, for giving the outline of the project. You have just explained the what the journey for innovation, and he is going to give information to all of our students. Now, I heartily welcome Dr. Geetika Srivastav for her remark on, she is coordinator, for her remark on this inaugural function. Well, thank you so much. As well said by Kavita Madam, collaboration and cooperation is the key to uncover endless possibilities. With these words, I welcome Honorable Professor Pratibha Goyal ji, Vice Chancellor RML Awadh University Ayodhya, Professor S. Shukla ji, Honorable Vice Chancellor PRSU, Mr. Durga Prasad Tiwari, CTO INKOR Raipur, Professor G.R. Mishra, Head Department of Physics and Electronics, Dr. RML Awadh University Ayodhya, Professor Kavita Thakurji, President Institution Innovation Council PRSU, Dr. Ambar Vyas, and Dr. Dipendra Singh ji, Member IIC, Dr. Shailendra Patel, Registrar PRSU, and Dr. Anjani Kumar Mishra, Registrar RML Awadh University Ayodhya. Esteemed guests and participants, welcome to the inaugural ceremony of this groundbreaking joint event on innovation and hands-on training brought to you jointly by Dr. RML Awadh University Ayodhya and PRSU Raipur. Today marks a pivotal moment as we embark the journey of collaboration and learning through expertise and resources of 2 institutions, Dr. RML Awadh University Ayodhya and PRSU Raipur. Through this event, we aim to cultivate a culture of innovation, power of knowledge exchange, and experiential learning to shape the future leaders and innovators of tomorrow. Together, we aspire to push the boundaries of what's possible, to challenge conventional thinking, and to inspire a generation of problem solvers and innovators. Through this prototype process design and development workshop, we aim to equip participants with the tools, skills, and mindset necessary to tackle the complex challenges of a complete system design from a bare idea. Innovation knows no bounds, and neither do our aspirations. I extend my heartfelt gratitude to the visions of 2 visionary honorable vice chancellors of 2 institutions who made this event possible, and their commitment to excellence and innovation is commendable. Without further ado, let the journey begin. May this event be a catalyst of transformative ideas, meaningful connections, and lasting impact. With these words, I welcome a day
filled with boundless possibilities, and let our collective brilliance illuminate the path of innovation. Thank you. Thank you, Dr. Geetika. Definitely your motivative words is going to contribute to all of us students and always just give energy to all of us. We are fortunate, though I have not visited Awadh University, but I always feel connected to Awadh University because of our Vice Chancellor. Always, I think so. I always said, and he always introduces something new, innovative, a new thing he shares with me. So I always feel connected, that I'm also connected with this university directly or indirectly. We are very fortunate that the Honorable Vice Chancellor, Professor Pratibha Goyal, is with us. And I just heard about her dynamism. I've never met her, but I'm very sure that what the energy and what the enthusiasm, what we have received, and definitely going to help us. And this collaboration is going to definitely contribute to us. So I very humbly, I invite Professor Pratibha Goyal ma'am, Honorable Vice Chancellor, to say or to bless us with her words. Thank you, Professor Deependra Singh. Respected Professor S.N. Shukla, Vice Chancellor, Ravi Shankar University. At the outset, I would say this is a very, noble endeavor that such a nice workshop is being organized with the collaboration of the two universities. And it just happened because of, an idea given by Professor S.N. Shukla himself, who belongs to us. And he gave the idea of MOU, and that MOU could be possible. We had it, and then we decided to collaborate. And this is the result of that idea of collaboration, that this collaborative workshop is being done. Then for that, in fact, I would say my sincere thanks to Professor S.N. Shukla. This workshop, which is being organized on a very pertinent topic, that elderly care reminder system. So these elderly people, as you know, they are, much respected people of the society, senior citizens. They dedicate their lives, very long period of their lives, for the betterment of the families. They dedicate themselves to the children. They give their whole life for the society. Then it becomes the responsibility of the scientists also. It becomes the responsibility of the youngsters also to take care of them. Thanks to the upliftment in standard of living these days, proper medical care is there, proper kind of medicines are available, that life expectancy has increased. Earlier, when I used to be a student and I used to go for, I used to participate in debate contests, and particularly that was the time when population explosion topic was very much, common in these debates. And when we used to, participate in debate on that topic, we used to always mention that life expectancy is 54 years. But life expectancy has these days increased by decades. So these people, they are very important section of our society. It is our responsibility to take care of them, because many of them, they are still capable of going on with their contribution to the society. They are still there. If some ailments, they are taken care of. If some help, if some support is provided, then large number of people from this section of society are still capable of contributing, because they are experienced also. They are, able people. They are highly educated people. They have wisdom with them. They have knowledge with them. So society, even these elderly people, society can make still use of these people, provided we give them the required respect and support. Now, so far as respect is concerned, this workshop itself is a proof of that respect. You have thought of such a noble topic, elderly care reminder systems, how your ideas, they can generate the prototypes which can be helpful for these people to lead their lives in a respectful manner, in a dignified manner. So this topic itself
gives a proof that we think for them. It's a noble idea. It's a noble endeavor, which you have, started today. So they say that ideas move the world. So if ideas are there among the youth, some hand holding is provided to them, the right kind of environment is provided to them, then these people, certainly their idea blow up can be there. Some incubation centers of the universities, they can they can hold the hands of these people, and through innovation, they can develop there some prototypes which industry people can later on, they can give a commercial platform for these prototypes, that how products can be developed on the basis of such ideas, and such how support can be provided. So this is a very good, I say, the job is very well started. And our university, Ram Manohar Lohia Awadh University, is also doing a lot for the elderly people. We ourselves, our university has adopted 2 old age homes where we take care of the psychological aspects of these people. Our students go to these old age homes, they talk to them, they try to understand their requirements. So your scientists and our psychologists, our sociologists, they can join hands. Our people can try to know that what are their requirements, what ails them, and your scientists and our scientists together, they can try to develop the solutions, the scientific solutions to develop the, to take care of these people. So with these ideas, I would like to congratulate you all for starting this very good workshop. And I'm sure that some good ideas will emerge out of this. And this workshop is surely going to motivate young scientists of the 2 universities. Thank you very much. Thank you so much, respected Professor Pratibha Goyal ma'am. And you have given an insight, a different angle to that problem, that on what we are working, an insight, and what the university is also doing. Thank you so much for giving such an insight on this workshop. Now I am willing to invite most dynamic Vice Chancellor of our University, Professor Sachidanand Shukla sir. डबल इंजन की सरकार बहुत कॉमन वर्ड है जो यूपी में सुनते होंगे. हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, क्योंकि हमारे 2 वाइस चांसलर, डायनेमिक वाइस चांसलर. अभी तक मैं 2 डबल इंजन बोल रहा था कि हमारे वाइस चांसलर और कविता मैडम दोनों हमसे सीनियर हैं और हम उनकी एनर्जी से एनर्जी को पेस नहीं कर पाते, मैच नहीं कर पाते हैं. नाउ वी आर हैविंग अ ट्रिपल इंजन सरकार बिकॉज मैडम हैज आल्सो जॉइन्ड इन दिस एंडेवर. सो आई एम वेरी होपफुल दैट डेफिनेटली व्हाट द एनर्जी वी विल गेट फ्रॉम दिस जॉइंट एफर्ट is going to contribute to us, and definitely we are going to end up with a very good solution to this, what the problem we have taken. So most humbly and respectfully, I am inviting Professor Sachidanand Shukla sir, Honorable Vice Chancellor Pandit Ravi Shankar Shukla University, to give his remarks on this inaugural session of this 2 days workshop. Sir, please. बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी, और बहुत अच्छी बात आपने कही डबल इंजन सरकार की. सबसे पहले तो आदरणीय प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी, कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक जो ज्वाइंट प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर. डेफिनेटली हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल है वो कविता ठाकुर जी उसको चेयर करती हैं, और दीपेंद्र जैसे जो डायनेमिक प्रोफेसर हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं. और अब सबसे अच्छी बात है कि इस इनोवेशन काउंसिल से एक और कंपोनेंट हमारी अपनी पैरेंटल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में जुड़ गया है, और ये बहुत सेटिस्फैक्शन भी देता है. और इसके अलावा आप जैसे वाइस चांसलर की छत्र छाया में प्रेरणा भी देता है कि कुछ मिलजुल करके और बहुत अच्छा कर सकें. हमारे साथ मिस्टर हनी दुर्गा प्रसाद तिवारी जी भी हैं, जो इस पूरे के पूरे 2 दिन के वर्कशॉप को लीड कर रहे हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए सहमत हुए हैं. जो इनोवेशन का जो टॉपिक चूज किया गया है इस वर्कशॉप का, इसके बारे में मुझे सिर्फ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़े होंगे, मुझे सिर्फ ये कहना है कि इनोवेशन के लिए कोई बहुत स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है. इनोवेशन आप सिर्फ अपनी निगाह घुमाइए और जो भी चीजें आपको दिख रही हैं अपने आसपास, जो भी ऐसे
चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें क्या आप करेक्शंस कर सकते हैं, क्या आप कुछ इनोवेटिव एडिशन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप फोकस करें। किसी बहुत बड़ी चीज के ऊपर फोकस करके और उसमें करेक्शंस करने से बेहतर है कि जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल जो कंपोनेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे कनेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में विचार करें और उसमें इनोवेशन को सर्च करें। और अभी हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है आइडिया थॉन का यूनिवर्सिटी लेवल पर। इसमें हम विश्वविद्यालय स्तर पर जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग सोशल साइंस स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशल साइंसेज, फार्मेसी एंड ऑल द फैकल्टीज, उनको लेकर के हम एक आइडिया थॉन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि सारे बच्चों से कुछ इनोवेटिव आइडियाज हम सीख करेंगे, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स हमने बना रखे हैं, और उसमें जो भी बेस्ट 5 आइडियाज होंगे उनको हम एक स्टार्टअप के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ऐसा टास्क मैंने इस IIC की टीम को दे रखा है और बहुत सक्सेसफुली उस डायरेक्शन में आप लोग चीजों को ड्राइव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो सोशल कनेक्टिविटी है, वो उसके फैकल्टी मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं और अपने स्टूडेंट्स को कितना मोटिवेट करते हैं सोशल कॉजेज के प्रति और उसमें एकेडमिक्स को कनेक्ट करने के प्रति। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यूनिवर्सिटीज की बेसिक ड्यूटीज में से भी ये आता है, और इस डायरेक्शन में हम कुछ काम कर पा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी पैरेंटल यूनिवर्सिटी हमको ज्वाइन कर रही है। इससे ज्यादा सुखद कोई चीज नहीं हो सकती है किसी भी एक प्रोफेसर के लिए या किसी भी एक वाइस चांसलर के लिए। जो टॉपिक चूज किया है वो ऐसा ही टॉपिक है, एक सोशल कॉज या जो सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। जो एल्डरली पर्सन्स हैं हमारे, उनको हम कैसे टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उनको असिस्ट कर सकते हैं, कैसे उनको हम उनकी केयर कर सकते हैं, इस बारे में किसी भी माध्यम से अगर हम विचार कर रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये एक रियल इनोवेटिव अप्रोच है। और इसी तरीके के जो इनोवेटिव अप्रोचेस हैं उनकी आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटीज आगे आएं, अपने स्टूडेंट्स को पुश करें और उनमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जो नरिशमेंट है उसके साथ साथ उनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं उसको पुश करें और उसको डेवलप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा सकें। मैं चूंकि मैडम वाइस चांसलर भी हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये एक प्राइमरी लेवल इनिशिएटिव है जो ज्वाइंट एफर्ट है। हम लोगों ने जो MOU साइन किया है उसके अंतर्गत, और इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके एंड पर भी चलते हैं, हमारे एंड पर भी चलते हैं। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि यूनिवर्सिटी हमारी एसोसिएट हो सकती है या हम RML AU को एसोसिएट कर सकते हैं, जरूर रिसोर्स शेयरिंग, थॉट शेयरिंग और इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शेयरिंग के लिए हमको आगे आना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि शायद जो MOU हम लोगों ने साइन किया है उसकी भावना भी कुछ ऐसी ही है कि जो हमारे जो टैलेंट्स हैं, एकेडमिक टैलेंट्स हैं, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकें, आई मीन RML AU इंटरेक्ट कर सके, और RML AU के जो एकेडमिक टैलेंट्स हैं उनसे हमारे रायपुर की यूनिवर्सिटी इंटरेक्ट कर सके और कुछ हम नया कर पाएं। ऐसा हमें लगता है कि अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो शायद MOU जो हम लोगों ने साइन किया है वो काफी सक्सेसफुल भी माना जाएगा और सेटिस्फैक्टरी भी रहेगा। मैं प्रोफेसर कविता ठाकुर चूंकि खुद बहुत डायनेमिक हैं और दीपेंद्र खुद बहुत डायनेमिक हैं और काफी कुछ ये लोग जब से मैं आया हूं तब से 24/7 के मोड में चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जिस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स और इनोवेशन को लेकर के, उस डायरेक्शन में और भी अच्छा कर पाए आपकी टीम और भी यूनिवर्सिटीज को एसोसिएट कर पाए। और अभी हम सिर्फ RML AU के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट 3 या 4 यूनिवर्सिटीज या इस तरीके के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एक साथ चीजों को ड्राइव करें तो शायद और भी कुछ हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम्स का एलिवेटेड वर्जन अवेल कर पाएंगे और शायद कुछ और भी
उस डायरेक्शन में नॉलेज गेन कर पाएंगे। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और कुछ ऐसा कॉन्सिडेंस है कि मेरा ये जो प्रोग्राम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के साथ कोइंसाइड कर गया, इसलिए मैं एक सेपरेट रूम में आ गया हूँ, क्योंकि हमारे चैम्बर में जो मीटिंग चल रही है वो थोड़ी सी काफी डिस्कशन वाली मीटिंग है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा आधा दिमाग इधर है और आधा उधर है ना, बट एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव के लिए आपको साथ देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और जो हमारी इंटायर टीम है IIC की, उसको इस प्रोग्राम को ड्राइव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे इससे जुड़े हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपको सिर्फ बच्चों ये बोलना है कि मैंने शुरू में ही कहा कि अपने अगल बगल देखिए, इनोवेशन को वहां ढूंढने का प्रयास करिए, अपने घर में ढूंढने का प्रयास करिए, आपका जो डेली रूटीन है उसमें ढूंढने का प्रयास करिए। और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हम नॉर्मल जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें इग्नोर कर देते हैं, बट अगर उसको थोड़ा सा क्रिटिकली हम ऑब्जर्व करें और उसको एनालाइज करें तो शायद इनोवेशन वहां से भी निकल आएगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में अभी इनिशियल लेवल पर विचार न करें, जो छोटी छोटी सीढ़ियां हैं वही मंजिल पर पहुंचाती हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही आप मंजिल पर पहुंचते हैं। आप सब और मैडम को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमेशा की तरह हर चीज दिल से और सीधे दिल तक जाती हुई और सबके असर दिखाती हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इनिशियल रिमार्क देने के लिए और अपने जो विचार हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में रखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त थे, लेकिन शायद हमारे आग्रह पे आपने ज्वाइन किया इसको। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए। फर्दर आई एम जस्ट इनवाइटिंग Professor Dr. Mr. Hani Durga Prasad Tiwari ji. Friends, before inviting him, I'm willing to give few information or few achievements of Dr. Hani Durga Prasad Tiwari, who is about him. Dr. Hani Prasad Durga Tiwari ji has obtained his MTech from Vishwesvaraya National Institute of Technology, Nagpur, Maharashtra in 2006. And he has completed his PhD in Electronic Information and Communication Engineering from Konkuk University, Seoul, South Korea in August 2012. If he has a very enriched biodata, and when I was going through it, it is very impressive. And just I'm sharing few important achievements what he had made from his biodata. That Tiwari has worked as a postdoctoral research also at South Korea, Seoul, and there again he has joined as a assistant professor in the computer engineering department of Kwanggun University, Seoul. And he has worked till 2016, he has worked there. Then he was again worked as a team leader in a principal research at Hymin Corp company that is also situated at South Korea. And he worked as there at till December 2016. Then Dr. Tiwari has worked also as a technical consultant of various firms in the South India and South Korea. Dr. Tiwari has a very impressive record of publication and patent with over 16 SCI and SCI e-papers and 20 conference papers and 4 patents. Dr. Tiwari work extends to consultancy as well as having a design GUI for an electronic charging station for Modern Tech Changwon Republic of South Korea from 2021 to 23. His future interest is to include developing healthcare portable medical system, collaborative smart sensor system, and Internet of Robotic Things, demonstrating his ongoing commitment to advancing technologies for societal benefits. So just I have interacted with him, a very enthusiastic engineer and always striving towards excellence. And we are very fortunate that he has interacted with us and he has given his consent to conduct this workshop. So just I'm inviting Dr. Tiwari for his welcome remark in this inaugural session. Dr. Tiwari, please. Thank you so very much, sir. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to the organizers and the head of prestigious institutes. I would say your efforts in bringing this workshop to life is commendable. मेरा ये मानना है कि कोई भी इनोवेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
अब हम यहाँ पे रायपुर में जो इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके चार्जिंग स्टेशन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर रहे हैं। और इस दौरान हमारा ये मानना है कि हम हमारे एक्सपर्टीज को कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ इनोवेटिव आइडियाज को डेवलप करने में, और हमारा इंडस्ट्री का रोल प्ले करने में इनोवेशन और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फॉर द कमर्शलाइजेशन ऑफ आइडियाज. This is what we want to achieve. I'm really happy that right now we are also joined by the dignitaries all the way from South Korea, Dr. Harsh Tiwari, the director of R&D from Modern Tech South Korea. There are also colleagues of us from South Korea who have joined in this meeting. And the reason for asking them to join this meeting was to show that we, although there are very few people who know about Raipur, Chhattisgarh outside India, but we are into the map. We are doing a lot of innovative work, and we are open to international market where people can come and invest with us, and we'll have a definite R&D unit set up for them so that we can not just work on prototypes but the commercialization of the aspects. I would like to request all the faculty members who have joined us to please share the link of this meeting with as many students as possible. They can be from any department, not just engineering, non engineering students के लिए भी इसके सेशन के अंदर में हम बहुत सारी बातें करेंगे. हमारा पूरा एक्टिविटी हैंड्स ऑन एक्टिविटी है. इसके अंदर में किसी भी तरीके की कोडिंग के बिना आप एक प्रोटोटाइप कैसे डेवलप कर सकते हैं हम ये सिखाने वाले हैं. हम ये सब कुछ आपके थ्रू ही करवाने की हमारी प्रैक्टिस रहेगी. और हमारा द आउटकम दैट आई वुड लाइक टू सी एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप इज every single participant has made a prototype, and we would like to establish that by collective working we can come up with solutions which have not just the commercial feeling to it, but also they are the solutions to the society as a whole. So मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करें. एक और एस्पेक्ट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2019 में लाई गई थी उसके तहत all the faculty members can also develop prototypes, and they can collaborate with the students to in the form of startups. So it's not just the students but also the faculty members who would gain something out of it, even in a commercial sense from in a long point of view. So I look forward to working with you all and developing some really good prototypes by the end of this workshop. Thank you so very much to all the dignitaries attending here and giving us a chance to work on something new in this region. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Tiwari, a very trained engineer outside India, studied in India. So we are having a combination of knowledge, and I'm very sure that today what the session is going to take, that will be a landmark for all our students, and they will initiate for the commercialization of their idea. So thank you, Dr. Tiwari, for giving your insight in this inaugural session. Now I'm inviting Dr. Ambar Vyas to give his concluding remarks over the session. Dr. Ambar Vyas, please. Thank you, sir. First of all, as we know that we have chosen a very right topic for this workshop, empowering innovation, prototype, process design and development with a focus on elderly care reminder system. We all know that it is the vision of our Honorable Prime Minister of Viksit Bharat 2047. And as we know that we are progressing, it is one of the important duty we should have a holding of our elderly generation, which is the most required. For this, I would like to thank both the dynamic vice chancellor of the two universities who has taken this initiative to jointly and permitted us to jointly hold this event apart from traditional teaching, so to show that universities are not only involved in research and academics but also being one of the major stakeholders in development of the country towards Viksit Bharat. I heartily thanks both the vice chancellors of the universities for providing us the opportunities and giving their dynamic vision to do or perform this workshop. We are grateful
to our Honorable Vice Chancellor Sachidanand Ji Shukla, sir, for always motivating us and always allowing us to do the things in the manners we want to have its reach to the end stakeholders, that is to the community and the students. We are also thankful to the Vice Chancellor, Professor Pratibha Goyal, Madam, from Ram Manohar Lohia Awadh Vishwavidyalaya, for joining and holding hands towards giving a platform to the students of both the universities to do a work which is being initiated under academic industry collaboration. That is, we are the part of the academics, and Dr. Hani Durga Prasad Tiwari ji from the industrial or from the industrial prototype, he is ready to give his full time. I am also thankful to Dr. Geetika Srivastav, coordinator from Ram Manohar Lohia Universities, our dynamic president, Dr. Kavita Thakur Madam, under whose visionary guidance we are performing all the tasks and are able to do such collaborations with the reputed universities like Ram Manohar Lohia Universities. We are also thankful to the IIC members of both the universities to present over the functions. We extend our thanks to Dr. Hani Prasad Durga, Hani Durga Prasad Tiwari sir and his team. I can make out from the emojis during the his deliberations that he is very popular and he is very practical and keen to give the guidance to our students for holding us. We are thankful to the registrars of both the universities for providing us this virtual platform. And as rightly said by Dr. Deepen Singh sir, we had started with a triple engine Sarkar, but initially on this virtual platform we had started with a triple engine train, but we'll take it as a single bullet train moving towards the Viksit Bharat in the coming session, and will perform offline program and collaborative program in coming futures on this important topic like elderly care we have chosen right now. I am also thankful to all the faculty members from both the universities who has joined these initiatives, and most special, without taking much time, the most important thing is being academician, being teacher, being honorable vice chancellor of both the universities. The academic leadership has provided the platform to the students. Now we are the coach. We are out of the ground. Out of the ground. We'll cheer you. We'll handhold you. But it is the students who has to take this drive to the society, who has to take the challenge, who has to develop the things. So without taking much time, I would like to thanks one and all who are present here, and I extend my thanks to everyone who has joined this conference. Now over to you, the coordinator, Dr. Deepen Singh sir. Thank you one and all. Thank you, Dr. Ambar Vyas, for just easing my duty of thanking everybody who has joined this this inaugural session. So we have heard all the stakeholders of this workshop and the guests who have motivated us. So here we are ending the inaugural session, and very soon we'll join the first session of the workshop, which will be again taken up by Dr. Tiwari. So thank you very much. Dr. Dipen, All the Dr. Dipen, I would like ma'am, to. you wish to say something? So Dr. Yeah. Dr. Thakur, madam, wish to say something. Madam, please. Yeah, the very important aspect, group virtual photographs. So all the 84 participants are requested to please turn on your cameras for virtual group photo. Admin will take this photo. So please, all the 84 participants, then we will end this session. Please, I'm again requesting all the participants, all the stakeholders, all the teachers and professors who have joined this virtual inaugural session, please on your camera so we can witness this, we can take your photograph and keep in our memories also. Please, I'm requesting everybody to please on their camera. I think so most of them have turn on their camera. So just I'm requesting the admin to take photograph.
I'm sure Yeah. admin has taken photograph. Yes. Yeah. So thank you, admin, for taking our photograph. So again, I'm very thankful to all of you for joining this inaugural session. Thank you so much, and I'm inviting all of you to join the first technical session after a few moment. We will be sharing the link with you. Thank you so much, all of you. Have a good day. Just 1 minute, sir. Yes. Yes. Please. Yes. Please. Ma'am, I've shared a link for a website, recent Okay. trends and topics in 2020. I request all the participants to go through that web page. They will have some different ideas. Okay. आइडियाज को अपने प्रोटोटाइप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं आने वाले सेशन में। तो आप कोई भी एक आइडिया पिक कर लीजिए और उसको उसको यूज करके हम प्रोटोटाइप बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल स्टेट करते जाऊंगा, आप अपने एग्जांपल को उस तरह से मॉडिफाई करते जाइएगा, तो आपका खुद का एक प्रोटोटाइप बन जाएगा। ये सारे आइडियाज में से, और एक आइडिया को कई लोग यूज कर सकते हैं, तो जितने भी लोग यूज करना चाहें। ये मैंने आपसे, और जो स्टूडेंट्स ये नहीं मैसेज देख पा रहे हैं, एक सर ने एक व्हाट्सएप लिंक दिया था सभी को ज्वाइन करने के लिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे भी मैं आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप ये वेब पेज में देख सकते हैं और डिजाइन्स को आप चूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हेलो। हाँ हो गया थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Thank you so very much to all the people. So we will meet at 12 Yes, or ma'am. or before 12 as you 12. wish. 12 is fine with me. 12. Yeah. So all the participants are requested to please join on 12 noon, right, today. And as per the instruction given by Dr. Hani Durga Prasad Tiwari, please select and proceed. Just go through the website or link. उस वेबसाइट में
हेलो हाँ 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 वो बैठे हैं ऊपर, सेमिनार हॉल में ही है उन लोग सब, वहां पे राउटर लगा हुआ है, अपने यहाँ के बच्चे बैठे हैं ऊपर अपने स्टूडेंट्स। हाँ हाँ Hello, Kavita ma'am. Hello, Kavita ma'am. यस यस प्लीज I'm so sorry, ma'am. I was on another call, so I couldn't pick your call. Yes, मैडम ma'am. यू, yeah madam you have to chair the next session, right? Okay, okay, I'm there. At sharp 12, right? Yeah, yeah, I'm here only. Okay. नारायण जी आपको नमस्कार। नारायण जी आपको नमस्कार। Awadh Narayan sir, Kavita madam is saluting you. माइक म्यूट है लगता है।
Shall we start the session? Is our speaker, Dr. Tiwari, you are ready? Then we can start the session. Dr. Tiwari, Dr. Durga Prasad Tiwari. Let me call him. Sure, ma'am. I'm in the Yeah. session now. Yeah. Okay. Shall we formally start the session? Just a second, ma'am. Okay, sure. You confirm it, then I'll start. Ma'am, let's start. Okay, welcome to the first technical session of this workshop. I would like to welcome the speaker for the session, Dr. Durga Prasad Tiwari ji, who is a Chief Technical Officer in INKOR Technologies, India. Dr. Tiwari has obtained his MTech in Embedded Electronic System from Vishwesvaraya National Institute of Technology, Raipur, and completed his PhD in Electronics Information and Communication Engineering from Konkung University, Seoul in 2012. He has obtained various scholarships, including scholarship from Human Resource Development Ministry, Indian government, Institute of Information Technology Advancement, a South Korean government organization, for his PhD research. Dr. Tiwari has also worked as a postdoctoral researcher and then as a research professor in Sangkongwang University, South Korea. He then served as an assistant professor in the Department of Computer Engineering in Kwanggung University, Seoul. He then worked as a team leader and principal researcher in Haim Corporation, South Korea. Then Dr. Tiwari has been associated with Narasimha Reddy Engineering College, Hyderabad, initially as an associate professor and then later promoted to professor and head of department, Electronics and Communication Engineering. Currently, he is working as Chief Technical Officer in INKOR Technologies, India. Dr. Tiwari has credible publications and patents with over 16 SCI papers and 20 conference papers and 4 patents. His research and development work has included the development and fabrication of cycle of 5 ICs in collaboration with South Korean government agencies. He has also developed FPGA-based IC application platform for various embedded systems. Dr. Tiwari's work extends to consultancy as well, having designed a GUI for electronic charging station for a South Korean firm. His future interests include developing healthcare portable medical system, collaborative smart sensor, and Internet of Robotic Things, demonstrating his ongoing commitment to advancing technologies for societal benefit. I'm actually indeed privileged to invite such an eminent speakers for this technical session. Over to you, Dr. Tiwari.
Thank you very, very much, ma'am, for a so heartwarming welcome. To begin with, I would like to say that this entire endeavor works on only single principle: how connected we are right now through this workshop. So let me begin with asking a very simple question. What would you prefer the language of the presentation to be, Hindi or English? So I request all the participants just to type down Hindi or English in the comment section of this Google Meet comment section. Just write down Hindi or English so that I know that you are connected. So if you look at the whole figures, you will find out that all the faculty members request it to be English. All the students are requesting it to be in Hindi. Okay, what does that tell me? That tells me that if I am to design a system or something, even though I have an idea, I must take into the consideration of what is the demand of everyone. Okay, so I need to cater the needs of everyone. So what we will do is we will have some part of our presentation in English, some part of our presentation in Hindi, so that everybody is happy. Okay, this is the process where the innovation starts. Okay. So as you all know, we are here to understand the concepts of prototyping and how that prototyping will help us in developing a system or a design that we can later commercialize. There are certain aspects that we will see later on. That why do I keep saying commercialization? Okay, so and throughout the session I'll take example of elderly care reminder system, but as I already mentioned earlier, I expect everybody to have some form of design in their mind as we go along with this workshop. Okay. So what is prototyping? Prototyping is essentially making small मॉडल्स. आप जैसे स्कूल या कॉलेज के अंदर में आप एक मॉडल बनाते हैं, प्रोटोटाइपिंग वही होती है. प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है आपके दिमाग में जो एक आइडिया है, आप उसको उसको अपने दिमाग से निकाल के एक फिजिकल एंटिटी, समथिंग विच कैन बी मेजरेबल एंड विच कैन हैव इफेक्ट ऑन समबडी एल्स, आप उसको उस रूप में कैसे लेके आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोटाइपिंग. इट हेल्प्स टू मेक यू realize that what are the deficiencies in your own thinking process, and by obtaining a quick feedback you can make improvement. So before actually implementing something, if you make a prototype, अगर आप अपना एक छोटा मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल के तहत आप उसके अंदर में चेंजेस ला सकते हैं. So as we go along, what we will discuss is what are the different stages of prototyping, and we will see how those stages interlink with each other and how they help us in the getting the results faster. Like how do we accelerate our journey from idea in our mind to something which has credentials. So what we need to think of is making a model which enhances the user experience. When you are doing something for somebody else, by making their life easier, by making their life comfortable, by making giving certain kind of services, the process of reaching to that destination is prototyping. The prototyping is not limited to any electrical or electronic design. आपका जो प्रोटोटाइप होता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है. वो एक सर्विस भी हो सकता है, वो एक पहनने का कपड़ा भी हो सकता है, आपका फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है, नॉन फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है. द एनीथिंग which goes from the initial development cycle to final product which is used by somebody or a user, that entire thing is the prototype.
के कई सारे स्टेजेस होते हैं जो कि हम देखेंगे। अब हमारे पर्सनल जिंदगी में प्रोटोटाइपिंग का क्या एग्जांपल है, अभी तुरंत हुआ। अब मुझे एक प्रेजेंटेशन आपको देना है, दिस इज अ सर्विस दैट आई एम गिविंग टू एवरीबडी एल्स, आई हैव टू गेट टू अ फाइनल प्रोडक्ट। बिफोर रीचिंग टू दैट फाइनल प्रोडक्ट, मुझे आपको ये बताना था कि मुझे ये बताना था कि भाई मुझे इस फाइनल स्टेज, इस प्रेजेंटेशन के स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो मैंने एक कागज के ऊपर में कंटेंट लिखा होगा, मैंने आप लोगों से कंटेंट लिखने के बाद मैंने आपसे एक फीडबैक मांगा, कि आपको किस तरीके की लैंग्वेज पसंद है। तो आप, सम पीपल सेड इंग्लिश, कुछ लोगों ने बोला हिंदी। इस चीज को अपने दिमाग ध्यान में रखते हुए मैंने जब अपना प्रेजेंटेशन बनाया था, पहले ही उसको दो फॉर्म में बनाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस। भाई जो हमारे यहाँ के दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो हिंदी भी प्रेफर करेंगे, एंड देयर विल बी फैकल्टी मेंबर्स हु वुड बी interested to see everything in the form of English. So that helps us to show that how I can enhance the quality of my end result by asking or by interpreting my own experience in a way which is helpful to me. Now, this also helps me to address a lot of problems. While making my PPT, when I was in the prototype stage, when I was able to address this issue of language, I had come up with a solution. Okay, why not use simple English and its equivalent in Hindi, so that the presentation is more accessible and a user enhancing experience. इस स्टेज में आने के लिए मैंने हम वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, और वो जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसके हिसाब से आपके टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप होते हैं। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये एक बहुत फंडामेंटल डिस्कशन है, ये एक बहुत ही बेसिक डिस्कशन है। हम इस डिस्कशन का समय लिमिटेड रखेंगे, हम एक्चुअल एक्टिविटीज का समय ज्यादा रखेंगे, पर उस स्टेज पे पहुंचने के पहले कि हमें क्या करना है उसके पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। हम वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। So before making a prototype, you have to decide what is the kind of prototype that you are interested to develop, what is the purpose of each of these kinds of prototype, how will you test them, and what is the feasibility, that means how close it is to the actual product. That is what we need to know. So there are the types of prototypes can be classified as low fidelity and high fidelity prototypes. Fidelity means the dictionary definition of fidelity is something true to its nature. Low fidelity means something which is not too much true to the nature, to its actual nature, and high fidelity means something which is very much true to its original nature. एग्जाम्पल्स ऑफ लो फिडेलिटी डिजाइन है, जैसे मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना था तो मैं अपने कागज के ऊपर में लिखूंगा कि भाई मुझे ये बोलना है, ये स्लाइड आएगी, मेरे को ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो पहला मेन्यू ऐसा रहेगा, I'll draw some diagrams with my hand, and this is not the actual presentation, this is not the actual website, but I have written everything that I want to write in that. So there is a design with me, but the quality or the nearness of this design to the actual design is very less. So this is a low fidelity prototype, which is called as storyboarding, which is common in every design aspect. You basically start anything that you design, you start with the storyboards.
so what you have here is, let's say you want to design a web page or some kind of fixed size system, जहां पे आपको size पक्का पता है कि इतना होने वाला है. What you do is you take a certain cards of fixed size and then you write down physically by hand on them to make certain slides or presentation or screens uh, to mimic what you are going to see on the screen. How prosthetically. So I think what happens is somebody try, and my mic also gets muted off. Okay, so now there is something called as Wizard of Oz. Actually बहुत कम लोग जानते होंगे. Wizard of Oz एक मूवी थी, बहुत पुरानी इंग्लिश मूवी थी, विजर्ड ऑफ ऑज. उसमें एक बच्ची रहती है जो एक हाइपोथेटिकल दुनिया में चली जाती है जहाँ पे विचेस हैं और रोबोट्स हैं, एक तरीके की दुनिया में चले जाते. तो उस जगह का नाम रहता है ऑज, और वहां पे एक जादूगर रहता है विजर्ड जो सबको कोऑर्डिनेट करता है. तो विजर्ड ऑफ ऑज नाम की एक मूवी है. तो विजर्ड ऑफ ऑज इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटोटाइपिंग. व्हाट हैपेंस इज पीपल इंटरैक्ट विद सर्टेन मशीन thinking that the machine is answering me back, but in actual practice that machine is connected invisibly to a person who is giving the answer. The actual person is giving the answer, not the machine, but the other people who are interacting, they think that a robot or some kind of device is answering. For example, right now when I am asking you a question and you have a earphone with you, and your friend says those answers on your earphone, and then you give the answer to me. For me, I will think that you are giving the answer, but the actual answer is coming from your friend. He is the Wizard of Oz. He is the person who is giving. So एक प्रोटोटाइपिंग आपकी ऐसी होती है कि आप जब सामने का इंटरफेस बनाते हैं और बाकी सारा जो उसको काम करना है आप करते हैं. जैसे किसी ने आपको बोला कि भाई मुझे यहाँ से वहां तक सामान ट्रांसफर कराना है, तो आपने एक गाड़ी बना दी, पर गाड़ी को आप खुद ही धक्के के ले जा रहे हैं. ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बना दिया, जैसे कोई यूजर कुछ एंटर करेगा तो उसका आंसर आप ही दे रहे हैं, यूजर को लगेगा. तो वो जो सामने का इंटरफेस है वो अपना एक प्रोटोटाइप हो गया. So after looking at these different kinds of prototypes, the question is, okay sir, बहुत अलग अलग तरीके के डिजाइन है, मैं कैसे शुरू करूं एक प्रोटोटाइप बनाना. तो the very first step that you take upon you to start prototyping is conceptualization. The entire thing is basically 3 steps: conceptualization, development and testing, and the cycle repeats. That means आप एक कंसेप्ट पे शुरू करते हैं, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, आप केवल उस एक सेंटेंस से शुरू करते हैं. उस सेंटेंस के बाद में आप उसमें एक एक चीज ऐड करते जाते हैं. मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, कब तक बनाना है, क्या रिसोर्स यूज करना है, और इसका उपयोग मैं अपने फायदे या दूसरे फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए कैसे यूज करूंगा. ये आपके कंसेप्ट है, ये आप यू विल राइट डाउन समवेयर. Based on these goals that you have set for yourself, you will start developing either section by section or everything bit by bit all together. After you have done some kind of implementation, you will do the testing, and in testing you will take feedback from the output or by the user who is using your product, and based on that that feedback you will change your goals or modify your goals or eliminate some of the goals and then redesign, and this cycle repeats on. So after every cycle you will become more detailed. पहले केस में मैंने एक कागज पे लिखा था, दूसरे केस में मैंने एक कोड लिखा, तीसरे साइकिल में उस कोड को एक मोबाइल पे चलाया, वेबसाइट पे चलाया, चौथे साइकिल में मैंने फिर उसको ज्यादा लोगों को क्या फीडबैक मांगा. तो एवरी साइकिल आई विल इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर डिटेल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. A successful product
is always developed by the collaboration of multiple people. You cannot have a successful product developed only by a single person, because when you are designing something, you are always biased towards your design. Your design has to be verified or used by somebody else, and when they give feedback, unconsciously or indirectly, they also become a part of collaboration. So without that collaboration, without that feedback, your prototyping can never be complete. This also helps in speeding up the process, because let's say you're developing a solution and you did not think of a problem, and somebody said that, okay, this is the problem, and then you suddenly realize, okay, now the next stage which I was going to implement was actually opposite of what is being demanded. So then I don't need to do that. For example, just now, I was delivering this lecture in a flow, and somehow my I did not know that my mic got muted off, and somebody gave me a feedback. Okay, sir, your mic is getting कोई mic mute कर दे रहा है. So what did I do? I turned on my mic. After a few seconds, it again turned off, and then again turned off. And then I realized, okay, it's not the problem of my system. I should not go running for the system. It is somebody who is turning off my mic. And that feedback helped me to design a better system. Okay, I'll request somebody, please don't mute my mic. That helped me to achieve my goal. So all these things that is happening with you in your daily life contributes to your design. You don't look at your design just from the design perspective. You think it from how a person who don't have technical information about your product might use it, and then you design. So that eliminates a lot of activities which you would have undertaken without looking at by not looking at the feedback. आपने जबरदस्ती बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया होता, पर अगर आपने फीडबैक देखा होता तो ज्यादा अच्छा, अगर आपका प्रोटोटाइप अच्छा बना होता अगर तो. It also helps to provide the feedback in terms of refinement. Initially, I have designed something for a very large scale of people, and then I found out that, okay, this product can become, if I add certain details, it can become very specific application to somebody, and they are willing to spend a lot of money into it. So I am able to get more funding or more output by the process of prototyping, not feedback, the prototyping itself. By the prototype, whenever we say prototype, you have to understand that feedback is a part of prototyping. So when I say feedback, don't think it as a feedback, think it as a part of prototyping. Finally, your every single idea which you see around you started from pen and paper. Every innovative idea, or any implementation or any new thing that you see around you started from prototyping. So prototyping is kind of the heart of developing a very good system. How can we adopt this as a culture? What do we do that prototyping becomes a part of our regular development cycle? So prototyping is essentially experimentation, learning, and iteration. So every time you do this, you are prototyping. It doesn't matter at what stage your product is. आपने product launch कर चुके हैं, उसको 10 साल से कोई यूज कर रहा है, किसी ने उसमें बताया कि इसमें कमी है, आप वापस आके आपने उस प्रोडक्ट को ठीक किया. That is still prototyping. That is not maintenance. That is not modification. This is still prototyping. This helps you to turn every single idea that you get, which you think is plausible for helping somebody else, you make a prototype, and then it becomes a regular part of your daily life or practice, where whenever you find something, some idea that can be turned into reality, let me make a small design of it. मुझे आज मुझे ये पता चला कि मेरे घर में या मेरे मेरे रीजन के अंदर में एक पर्टिकुलर तरीके की प्रॉब्लम हो रही है. जैसे किसी को हमारे लोकलिटी में या किसी को, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रहा है. सो आई फाउंड अ प्रॉब्लम. मैं सब्जी लेने जाता हूँ, एंड देन आई फाइंड आउट देयर इज अ आइडिया दैट इफ आई कुक सर्टेन वेजिटेबल्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर
keeping the diabetes in check. What I'm doing, I'm doing a service. I'm trying to provide a service of cooking something. So what I do was I to take this vegetables and cook for myself and take feedback from others. Is this good? Okay, this is also prototyping. The reason for me to take all these varied examples is to stress this point that every time you take the feedback and you change certain way of working or a design or anything you do in your life is a form of prototyping. आप अपने आप को भी उनकी lifestyle improve करते हैं, तो you are changing the prototype of your lifestyle. So before I move into the real prototyping part, I'll address some of the very common questions. Is okay, sir, how does prototyping help the students? There are only three possible outcomes of a student life. There are only three possible outcomes. जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो केवल तीन में से एक चीज करने वाले हैं. Either they will take up a job, वो अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, या वो हायर स्टडीज के लिए जाएंगे. ये केवल तीन ही पॉसिबल आउटकम है. इन तीनों आउटकम में से इन तीनों आउटकम को आप सोचें तो आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं, वहां आपको कोई नई डिजाइन, आपको चले इंस्टॉलेशन के लिए बोले या आपको कोई डिजाइन करने के लिए बोले या कुछ भी बोले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी उस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. और आप उसका एक डिजाइन बनाइए, मॉडल बनाइए. यू विल थिंक ऑफ समथिंग, सम सर्विसेज, and that I'll modify and I'll put it to this practice, and that becomes your prototype. So prototyping makes your life easier when you are working under somebody. You have your startup. Obviously, every startup has to be innovative. So every time you want to go for a startup, you will design some prototype of your own. So obviously, generally हम prototyping सिर्फ startup से associate करते हैं, but ऐसा नहीं है. हम किसी के अंडर भी नौकरी करते हैं तो वहां पे भी prototyping होती है. But of course, startups के अंदर में prototyping is the very first step that you will take. Now, the third aspect, I'm going for higher studies. The process of going for a master's or a PhD program is you have to find some. In masters, what we expect is the students must identify a problem. And so let me start from BTech. So whenever you have three levels of projects: BTech undergraduate projects, graduate projects, that means MTech project, MSc projects, and then PhDs projects. In BTech projects, we expect our students that they must replicate some existing design. ये मोटर चलती हुई है, तुम एक चलती हुई मोटर बना. यहाँ पे एक उसका घर का मॉडल बना है, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स वो घर का वापस से मॉडल बनाएंगे. We want them to replicate something which is already existing. That's fine with us. At the MTech level, we want the students to identify the problems in a particular design. It can be anything, textile industry ले लीजिए या electronics industry ले लीजिए, कोई भी, whatever is the problem in a current design, can you find what are the available solutions for this problem? So the student identifies the problem and try to search what are the different solutions provided by others, and let me say what I can do. In the third stage, PhDs, we define a problem. We define a problem which is faced by a lot of people and there is no solution to it, and we propose a solution. In each case, what you are doing is you are taking the feedback of somebody and you are trying to implement something. So every student, when they go for higher studies, they need to modify some existing architecture, or they have to come up with a design which is better than others, or at least find a better solution to an existing problem, which is essentially prototyping. So prototyping is invariably one of the most important steps a student must undertake whether they go for a job or for higher studies or they start their own startup. This how does it help for my personal development or development? It's very obvious. You get a feedback, you improve certain thing, that becomes a realization. Of course, it accelerates. Prototyping helps us to accelerate the process of development. Can you give me one example from the real world? Can you give me
a very common question, sir. You have talked so much about prototyping. Can you tell me if have I seen any prototype? So if you look at the your mobile phones, the way the mobile phones were about 10 years ago, and you see the mobile phone now, you would find that some people made a mobile phone to do certain tasks. उससे आप पहले मोबाइल से सिर्फ बात हो सकती थी, वीडियो नहीं चलते थे, आप उसमें गाने नहीं सुन सकते थे, मोबाइल का काम केवल बात करना होता था। उस डिजाइन में किसी ने बोला कि भाई मेरे पास एक वॉकमैन है, इसमें गाने चलते हैं और इसमें मैं बात करता हूँ, मेरे को दो दो डिवाइस नहीं ले आना। अब प्रॉब्लम, उसका स्टेटमेंट क्या बना है, भाई ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उनको एक ही में कंबाइन कर देता है। तो फिर आया आईफोन। आईफोन के अंदर में I'll ask you a question. Why do you think iPhone is more popular than Samsung phones? Can someone answer this to me? Why iPhone became the status symbol rather than the Samsung phones? Why did Android? Why are Android phones not considered status symbol, but iPhones are considered? Can somebody tell me this answer? टाइप कर सकते हैं आप लोग, माइक चालू करके बता सकते हैं। We need feedback. That's how we develop prototype. We need feedback. iPhone or the Apple was the first to merge two different, absolutely different technologies into one single technology and offer something which was very unique. It is the expectation of everybody that Apple will keep coming up with innovative ideas in future, and so they would like to be associated with innovators of the world, people who changed the entire industry, who are the forefathers of technology from a very simple from a landline to a mobile phone to a mobile phone which, so right now if you look at your mobile, you just do 10% of talking on mobile phone, rest everything you do on your mobile phone, and your mobile phones are equally faster and stronger to a processor which is used in a space rocket. So people who have developed such a system, we would like to associate with them, and इसीलिए Apple को हम एक kind of symbol मानते हैं progress का, and that's why Apple has like our affinity towards innovators is more than people who copy them. So Samsung essentially copies from Apple, so nobody says we would like to be associated with copycats. That's why Apple. For the record, I have worked with Samsung people. We don't copy, we do our own design. So it's the thinking process that Samsung copies from Apple is not true. Okay, this is from my own experience, but because this is the general perception, that's why Apple is famous. So that's why prototyping and merging two separate things into one will make you very famous and will make you one of the leaders, not just in terms of terminology but also in terms of technology. अब आप जो मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया, अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं जिस बेसिक्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग और ये, तो मैं आप सबके साथ में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके। आई एम शेयरिंग अ लिंक in the comment section as well as the WhatsApp group. Whatever I have discussed right now, I had already written all this content in my webpage yesterday night, and it's out there with all the necessary links and everything. So you can have a look at them, and you can see various links. Okay. At this point, uh, I would like to stop the discussion part, and I want to get into the action part. So please, if anybody has some question, please ask it now so that we can go into the work वाले mode में जा सके हम. If anybody has a question, please ask me. Any questions, please? बिना फीडबैक के प्रोटोटाइप नहीं बनेगा. आप क्वेश्चंस पूछिए, आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं है तो एटलीस्ट टाइप नो क्वेश्चन सर. I would, there are how many participants right now? There are about 71 participants. I would like to see no questions sir from 71 participants.
three students, four. Yes. What is the yeah, that's a very good question. What is the most popular prototype currently? If you see the way most of the people start designing, almost everybody starts with storyboarding. Almost everybody starts with prototyping. But what happens is you basically think pen and paper. That is the most popular or the common type of prototyping to start off. But when you come to actual work, you would say that uh, this low fidelity, this Wizard of Oz prototyping is very popular in software designs and kind of mechanical designs in a way. But for non-technical people, sketching and storyboarding is the most popular type of prototyping. What is low fidelity? And fidelity को आप ऐसा समझ लीजिए कि कितने करेक्टनेस से हम किसी चीज को रिप्लिकेट कर सकते हैं. फिडेलिटी का बहुत जगह उपयोग होता है. फिडेलिटी साउंड के लिए भी यूज होता है, इमेज के लिए भी यूज होता है. आपको किसी, हम एक बचपन में गेम खेलते थे कि एक सर्कल में बहुत सारे लोग बैठे होते थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कहता था, फिर वो दूसरे तीसरे व्यक्ति के कान में कहता था, और आखिरी में हम देखते थे कि क्या वो स्टेटमेंट सही वापस लौट के आया. हम ऐसे गेम खेलते थे. तो वो जो 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 एक्यूरेटनेस है जिससे वो मैसेज एक से व्यक्ति से दूसरे को पास हुआ, वो कहलाती है फिडेलिटी. हाउ ट्रू समथिंग इज टू इट्स ओरिजिनल नेचर. अगर मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं तो वो वेबसाइट जैसा दिख रहा है तो वो हाई फिडेलिटी. अगर वो वेबसाइट जैसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसके आइडियाज हैं, तो वो लो फिडेलिटी है. मैं एक जैकेट बनाना चाहता हूं पहनने के लिए. अगर वो कपड़े का बना हुआ है, इवन तो उसका साइज दूसरा हो चलता है, पर लगभग उसी डायमेंशन का बना हुआ है, तो वो हाई फिडेलिटी है. परंतु मैंने खूब बहुत छोटा बनाया है, सिर्फ स्केच बनाया है, कपड़े भी बहुत डिफरेंट तरीके का यूज किया है जो ओरिजिनल वाले से, तो वो लो फिडेलिटी हो जाएगा. एनी मोर क्वेश्चंस? So I hope everybody is has picked up a topic for. One question. Please. So suppose as a student, when he wants to make a prototype of his project, जी. then how much feasibility is that for him to make? If it is a very novel idea, then you have to go through many manufacturing phases. Yes. So it is a difficult task to decide that what will be the best size of that model. Yes. To be within the budget. There are two answers to this. Okay, one is academic answer and one is the industrial answer. Okay, I'll start with academic answer first because you're a student. You're asking from a perspective of the students. For the students, the budget is very important. So your entire focus is towards budget when you are a student. But when you are making a prototype for a company, you want it to be as high fidelity as possible in the initial stage itself, because then it tells you all the problems. Okay, but when you are making a student project, a low fidelity, अगर आप सेम मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं या आपका साइज बिल्कुल ओरिजिनल की तरह नहीं है, आप केवल उसका सिमुलेशन भी बनाते हैं, आप उसका केवल एक कंसेप्ट भी बनाते हैं, तो इट इज गुड इनफ फॉर द स्टूडेंट्स. फिर वो जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग है, जहां आपको फंडिंग अवेलेबल होगी, जहां पे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जहां आपको फीडबैक एट अ स्टूडेंट स्टेज. जैसे मुझे अगर एक वो बनाना है, एक छोटी गाड़ी बनाना है, और मैं प्लास्टिक के उसमें गियर यूज करूंगा तो मेरा कोई काम का नहीं है, तो मुझे मेटल के गियर यूज करना है. पर आप मेटल के गियर बनाने वालों को तो जानते हैं नहीं. उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो दूसरे
लोग हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए एट अ स्टूडेंट लेवल कंसेप्चुअल डिजाइन और मॉडलिंग और लो फिडेलिटी डिजाइन इज इनफ। व्हेन अ स्टूडेंट गोज इनटू एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मोनेटाइजेशन के जब सवाल आएगा, तो यू हैव टू मेक अ हाई फिडेलिटी डिजाइन। उसमें आपको दूसरे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है? एनी मोर क्वेश्चंस? Any more questions? Okay, so what I request everybody is, आप लोग प्लीज जो भी आपने टॉपिक सोचा था, उस टॉपिक के बेसिस पे नाउ वी विल स्टार्ट प्रोटोटाइपिंग। ओके, so just a second, I'm connecting with some websites that I'll share with you in just a minute. सर आवाज नहीं आ रही है। Hello, can you hear me now? Hello, can you hear me now?
Hello. Yes, sir. So, no, what I Yes, sir, you are audible. yeah, what I request everyone to go to Google and search for BARD, BARD. So what you will find is people will comment. It will be given that BARD has now changed to Gemini. So please click on that link. You must be logged on in your Chrome. आप Chrome में login करे होना चाहिए और आप अब आप अपने आप लोग सभी लोग Can you see my screen now? Yes, sir. So हम क्या करेंगे कि जो अभी आपने जैसे आप लोगों ने किसी ने कुछ आइडिया दिमाग में सोच रखा होगा कि आई वांट टू मेक अ प्रोटोटाइप फॉर दिस ओके सो व्हाट वी विल डू इज we will focus on developing in my presentation what I am trying to develop is a website for elderly care elderly care okay? तो मैं आप लोगों को सब ये सजेस्ट करूंगा टू फॉलो दी स्टेप्स मोर इजीली जो भी आपने आइडिया चूज किया है हम ये सोचते हैं कि चलिए हम ये एक प्रोडक्ट है जिसका हमने वेबसाइट बनाना है जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डिटर्जेंट पाउडर का हो गया या हेल्थ केयर का कोई हो गया या कोई भी जो भी प्रोडक्ट आपने चूज किया है हमको इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बनाना है मार्केटिंग का सबसे आसान तरीका हो सकता है एक वेब पेज बनाना तो हमें एक वेब पेज बनाना है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ठीक है आप कोई सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जैसे मैंने एल्डरली केयर चूज किया आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं तो मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा ये चूज करना कि भाई मुझे मुझे एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनाना अभी अभी फिलहाल मेरे पास कोई आइडिया नहीं है मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता है मुझे क्या करना है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मुझे क्या करना है what I am going to do is I am going to use the help of AI tools to find out what I can do. तो आपको जैसे आप लोगों को ये जेमिनी का स्क्रीन दिख रहा होगा ये एक AI टूल है गूगल के द्वारा. So what I just follow what I am trying to do here. I want to make a web page for ELD elderly care SYS system. डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग्स हिंदी में लिखना हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिखिए डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग्स ओके गिव अ लिस्ट ऑफ फीचर्स
that I can offer. बस बहुत simple. I want to make a web page for elderly care system. Give a list of features that I can offer. आई होप आप सब लोग भी अपने कंप्यूटर्स पे इस तरीके के चीजें कर रहे होंगे. तो आपको आपका प्रोडक्ट, कैन समबडी सजेस्ट मी एनी प्रोडक्ट राइट नाउ? आपने जो चूज किया उनमें से एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग? आई जस्ट शो वन मोर एग्जांपल आउट ऑफ इट. कोई भी एक एग्जांपल आप टाइप कर दीजिए, विल चेक इट आउट. ईवी चार्जर. ओके, ईवी चार्जर. आई वांट टू मेक ईवी चार्जर. तो मेरे 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 बिजनेस के नेक्स्ट हेल्थ केयर मॉनिटरिंग. वेरी गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड. सो हम क्या करते हैं, हम अपने जेमिनी में टाइप करते हैं आई वांट टू डिजाइन अ वेब पेज फॉर नेक्स्ट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम. सजेस्ट व्हाट फीचर्स will I offer through my web page. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि मुझे पहले जीरो आइडिया था, मुझे बिल्कुल जीरो आइडिया था, और मैंने एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट के बेसिस पे मुझे ये पता चल गया कि ओके भाई, मैं ये सब सारी चीजें मैं ये कर सकता हूँ. आई सिंसियरली होप कि आप लोग जो हैं साथ में ये स्टेप्स करते जा रहे होंगे, तो आपको ये कंटेंट अवेलेबल होते जा रहा होगा. मेरा आपसे रिकमेंडेशन है कि जो भी चीज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप एक जगह पे कॉपी पेस्ट करते जाइएगा. कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट, यू प्लीज टेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट and keep copying this content somewhere because we are going to use it. Okay, so now I have a basic idea of what I want to do. Okay, there are a lot of people who are who have participated in our discussion. There are about 58 members here, so there is quite a possibility that somebody else would also be interested in this kind of prototype. Next health generation monitoring or EV charger or a healthcare, somebody else would also be interested in it. What I propose is, I want to get the idea from everybody who is interested in my idea. Okay, so what I will do is, I'm going to share. So now, when you have proposed this to your friends, and आप लोग सब एक मीटिंग में बैठे हैं, and everybody is suggesting something. Okay, a meeting. How can I do it in the process of prototyping here online? What should I do to collect the ideas from everybody without making too much fuss about it? अब मैं बहुत ही simple तरीके से मैं idea कैसे gather कर सकता हूँ. For this, we call this something as the हम इसको कहते हैं कि ब्लैक बोर्डिंग और स्टोरी बोर्डिंग या टीम कोलैबोरेशन. We call this. So what I'm going to do is, I am going to suggest I am just now sharing a link for a tool. I have just for a tool which will give us a common platform to discuss with each other in form of. अभी जैसे आप मुझे मैसेज यहाँ टाइप करके भेज रहे हैं, पर आप इसमें ड्राइंग बना सकते हैं क्या? आप नहीं बना सकते. या आपको हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि 10 लोग एक साथ देख सकें उसको? हम ऐसा नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम एक वर्चुअल वर्क स्पेस को यूज करने वाले हैं. मैं इस वर्क स्पेस के अंदर में एक नया बोर्ड बना लेता हूं. आपको अभी जेमिनी के बाद में मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ. एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये मेरा दूसरा स्क्रीन जो है वो है
ये है मेरा मायरो का स्क्रीन। कैन एवरीबडी सी दिस स्क्रीन? और मैं जो जो अभी पर्टिकुलर स्क्रीन दिख रहा है, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है वो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। अगर आप ध्यान दें तो पहले लिंक के अंदर में इट वाज अप टिल इट वाज शोइंग एज myro.com/app/dashboard. Now it is showing you myro.com/app/board/ some name. This is the name of my board right now. This is a common board which I have shared with everybody, so that they can also contribute to my understanding. So what I will do is I will go to my workspace and see I have been given a lot of possibilities as templates कि मैं मुझे क्या करना है। मुझे छोटे छोटे स्टिकर्स बनाने हैं जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज लिखी हुई है, या मुझे टेबल बनाना है, एक माइंड मैप बनाना है, कौन कौन सी चीज से जुड़ी है। मेरे पास कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैं ये सबको बंद करके मैं एक सिंपल डिफॉल्ट, भाई अभी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मैं कोई टेम्पलेट न यूज करते हुए एक सिंपल चीज यहाँ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिख देता हूँ और उस कंटेंट का साइज आपको बढ़ा देता हूँ। Now I've started this board. I have written, I have combined two different things, EV technology and patient care. बहुत मैंने वो कर दिया, हेल्थ केयर, तीनों को कंबाइन करके एक लिख दिया। Now anybody who is interested in EV, I've already shared you the link. Now you can come and write down on this board. For example, मैं बोलता हूँ भाई अब मेरे साथ 10 लोग बैठे हुए हैं और मैं उनको बोलता हूँ यार मेरे को जो डिजाइन बनाना है वो स्क्वायर शेप की होना चाहिए, तो मैं एक बॉक्स यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, या मैं एक शेप बना देता हूँ। ये भाई मेरा जो प्रोटोटाइप बनना है वो ऐसे स्क्वायर शेप का होना चाहिए। जो मेरे पास में उस जो जो भी मेरा प्रोटोटाइप है ऊपर से स्क्वायर दिखना चाहिए और उसके अंदर में से कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, ठीक है। एवरीबडी कैन सी दिस राइट? एवरीबडी कैन सी दिस राइट नाउ? Please keep giving me feedbacks. Yeah. Others, can they see this right now? आप उस लिंक पे चले जाइए, आप लिंक क्लिक करके आप उस पे चले जाइए और आप यू एंड आई कैन शेयर आवर डिस्कशन। ओके, आप वहां पे जाके कुछ भी टाइप करके देखिए, आप कुछ भी बना के देखिए, आप कुछ ड्रॉ करके देखिए। आप वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस है। टी मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है, एरोज बने हुए हैं, स्टिकर्स बने हुए हैं, पेन बना हुआ है, कुछ भी लिखिए वहां पे, लिख के देखिए। जैसे कि हमने अभी अपने जेमिनी से देखा था कि हम जो है एक वो बनाना चाहते हैं, मैं पेशेंट हेल्थ केयर का सर्विस बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो पॉइंट्स मेरे को वहां जेमिनी ने बताए थे, जेमिनी ने मुझे जो बताए थे, एक सेकेंड, what I'll do is I'll go to my space and मैंने यहाँ पे एक स्टिकी नोट में वो everything which Gemini told me, मैं उसको पूरा यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो what I've done is, आप लोगों को बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। हमको ये है कि अलग अलग लोग जो हैं वो आके यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लीज somebody write something on this board, then only you will understand the importance of this. मैंने अपने आइडियाज यहाँ रख दिए
आपके टीम मेंबर एक दूसरे व्यक्ति है जो कि ये करेंगे. दिस इज, एज आई सेड, दिस इज अ एक्टिविटी, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन इट. नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा किसी को. Somebody write something on this. Go ahead. Okay. It is, I think it is already invite members. PRSU. Once again, I've given the access. I'll give a common link to everybody. इसके बाद में आप लोग को वो नहीं लगेगा, परमिशन नहीं लगेगी. So as you can see, there are people. हमको ये पता चल पा रहा है कि सभी लोग जो है अपना जब माउस वहां मूव कर रहे हैं तो कैसे मूव कर रहे हैं, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है. तो yeah, you see, this is the magic that I am talking about. Now, if anybody wants to write or contribute to the team, आप पता चल पाएगा कि आप क्या वो contribute करना चाहते हैं. And you can keep on adding certain text, you can keep on adding certain images, you can add whatever comes to your mind to participate. So what I request everybody to do is, जैसे मैंने एल्डरली पेशेंट केयर के बारे में इतना सब कुछ लिखा, आप उसमें से जाके कुछ एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि उसको हाईलाइट कर दीजिए या उसको डिलीट कर दीजिए, या अपने बाजू वहां से एक दूसरा टेक्स्ट एरिया चूज करके उसके बाजू में कमेंट लिख दीजिए. ओके, आई लाइक दिस पॉइंट, आई डोंट लाइक दिस पॉइंट, आई होप दिस वर्क्स आउट. आप ऐसा पॉइंट आउट कर सकते हैं. This is what is the first type of our prototyping, the storyboarding. तो इसीलिए हमें ये प्रोसेस के थ्रू जाना बहुत जरूरी है. Okay, can everyone see this? Okay, अब आप, what I request from you is, अब आप अपने तरफ से एक नया वो बनाइए. Somebody make a new Miro. So you must go to Chrome, search for Miro, and then share a common link to everybody. Share a common link to everybody so that we can also contribute. Can everyone hear me? I request somebody to go to Miro website.
somebody to go to Miro website and repeat the process and share it with us. So Dr. Harsh Tiwari has already shared his and Satish sir has also shared their links with us. Has anybody responded to their links? Shruti madam has also done. Oh, that's really something that. Okay, so what I request from other participants is we have a couple of links here. Satish sir, Shruti ma'am, Dr. Tiwari, we have certain links from them. I request everybody to comment on those. Without these, yeah. So Dr. Harsh has, yeah. I will show you one of the screen. I think this is the screen of Shruti ma'am. I'll also share the screen of. So as you can see, there are two things. Okay, so there are. I'll tell you one thing. If you go to on the top, there is a share button. Okay, so when you go to share button, you will see different options. In one of those options, you will find that the team collaboration link. If you share that link, then it will be visible to everybody. Otherwise, what happens is we can see your board, but we cannot collaborate. We will not be able to write anything onto it. So let me do one thing. Shruti madam has already done here. So what I will do is I will make a star here. Okay, and I will comment on this. I would like the design to be simple to use. Okay, this is my comment. This is my comment. So what I've done is I have commented on about the design. Whatever Shruti madam design is, I would like that design to be simple. This is what I would like to contribute to the team. Okay.
So I request people to comment on these. So then it will be easy for you to see how it works. Razak sir has also sent the link. Oh, this is very good. I'll share it with you just a second. This is good. So see, Razak sir did something which is very good, because he did two things. First, he wrote a very clear message. That's very important. And he drew a diagram which is relevant to, for example, I would associate heart with care. So because I would like to make a design with elderly patient care, this symbol tells me, okay, I am going to, my design has to be very simple and approachable. So it's not just the sentences which makes the difference, it is how you have written down these sentences. ये screen share का मतलब करना, इस tool का importance बताना नहीं था. इस tool को share करने का importance ये था कि आप देखें कि भाई आपके पास जो tool है उसको आप कैसे use कर रहे हैं. Just वहाँ mouse को click करके या करके, it's that's not the end result. What we want is something concrete. So if I contribute here, let me comment on the name, add a comment. Nice font, very clear. Okay, so what I have done is I have taken one initiative as a team member, and I have said, okay, this is my comment. So if somebody want to see the comment, they just click on that screen and they take part into it. Okay. So what we would like to do is, when people are commenting on your application, we would like to see what is the comment and how do we incorporate it. So when I have written, my comment has to relate to something that I will do. That means the reason I have written about font is because I would like to see the same font size later on when we make a design for a web page. Okay, इतना ही बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो दिखेगा नहीं. So that's me telling you something what I would like to see in my prototype. Okay, now we see one more design, then we move to the next step. This is shared by Prabhat Patel sir. One second. Oh, something really interesting happened when I clicked on Prabhat Patel sir's. Can somebody comment what is the interesting thing about the screen we are sharing right now? Please let the screen come in. Can you see the screen now? Yeah, can everybody see the screen right now? Can everybody see the screen shared by Prabhat Patel sir? I want everybody to recognize one something written on the screen which is of immediate importance to us. I request everybody to comment on something which is very relevant to us right now, which is visible on the screen. Please share. Either you can write on that screen. This is a screen shared by Prabhat Patel sir. There is something which is visible right now.
Okay, it's a template. Fine, that's a template. But there is something written on that screen which is of very importance to us right now. I request everybody, whatever is there are certain statements written over there. Please draw a circle, something of what you think is critical there. Okay, I'll start. Yes, lunch party. Lunch party is very crucial to us right now. You may think it as a joke. No, I am not joking. Because sometimes what happens is something very, very obvious to us. We don't try to include it in our prototypes. And there is when we make mistakes. Okay. Although it by happenstance, it was written lunch party, but it is still crucial for this meeting, that meeting that we are conducting. Okay, so one of the essential parts of prototyping is you don't miss any detail, you don't take anything for granted, and a very important aspect is it should be as crystal clear to others as it is crystal clear to you. So if you have certain idea in your mind and if you don't communicate it, if you just think that okay, this point is too small, it is quite possible that when you make a final product, you might miss that point. Okay, I'll give a very fundamental example. When I was in 8th standard, one of the lessons in our mathematics was algorithms. Okay, this is about 20-30 years ago. That was the very first time some subject or like this was introduced in CBSE pattern. So one of the standard question in that book was the process of making tea. The process of making tea. This is a very common example that I use while teaching the algorithms or digital system design to my students. What are the steps of making tea? What are the steps of making tea? So the process of making tea is I will collect the ingredients in certain, I'll collect the ingredients. I will collect the pan in which I am going to cook my tea. I will make sure that the stove is available, and then I will make sure that I have put the water in the vessel and I've put it on the stove and I've turned on the knob and I have ignited the stove. So even though I think that okay, obviously अगर मैं पतीला रख रहा हूँ तो गैस का स्टोव को चालू करे बिना तो होगा नहीं. This is my assumption. I am taking it for granted. No, when you make a prototype, you have to address every single scenario as it is. Okay, so now I want you to think back again in terms of the topic that you had decided. आप अपने टॉपिक के बारे में सोचिए और आप ये सोचिए कि सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट जो आपको लगता है जो आपने सोचा पर अपने लिस्ट में नहीं लिखा, ऐसे एक पॉइंट सोच के जैसे फॉर एग्जांपल I'll copy this content from Gemini into the chat box of our जो हमको जेमिनी में मैं काम करता हूँ, मैं जेमिनी का स्क्रीन आपसे फिर से शेयर करता हूँ. जो हमको जेमिनी ने हमें बताया था कि हमें एल्डरली पेशेंट केयर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी कि हमें क्या करना है. Can anybody identify something very basic that is missing from the very first explanation? So here हम emergency alert देने वाले हैं, remote monitoring कराने वाले हैं, fault detection कराने वाले हैं, medication management करने वाले हैं. ठीक है, ये 4 पॉइंट उसने सजेस्ट किए. Is there something which you think is missing from here?
आप एक लिस्ट, वो लिस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं वहां पे डेली असिस्टेंस के लिए भी है, ऑनलाइन कम्युनिटी के लिए भी है, वीडियो चैट के लिए भी है, मेडिकेशन डिलीवरी के लिए भी है, टेक सपोर्ट के लिए भी है, सब कुछ दिया हुआ है वहाँ पे। पर एक सबसे फंडामेंटल चीज हमने मिस कर दिया। कैन समबडी सजेस्ट मी? Connecting to elders, marketing, awareness, feedback, all true, all very true, but something which is even more basic than this, even more basic. Funding, of course, funding is the pillar stone of development, but because we are thinking of a website, prior to website, I will say that I would consider it as a second stage. अभी मैं केवल आइडिया लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मेरी सर्विस ने प्रोवाइड करना चाहिए। इसके अंदर में देखिए, आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी एक एडवर्टीजमेंट आता है टूथपेस्ट का, आप जो भी एडवर्टीजमेंट अपने हिंदुस्तान में देखते हैं, उसके अंदर में आप देखेंगे, इफ ओके आई स्टार्ट विद एग्जांपल, इफ आई से वर्ड ब्लू, if I say word blue, what product comes to your mind of which you have seen advertisement in TV? If I say color blue, what advertisement comes in your mind immediately? Blue. Please respond. If I say word blue, what product or what advertisement comes into your mind immediately? I'll give one example. You think of another. Okay, Rin डिटर्जेंट पाउडर या सर्फ, रेन, ये दोनों ही प्रोडक्ट ब्लू कलर के होते हैं। इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट में सारा बैकग्राउंड ब्लू या ब्लू के शेड्स में होता है, तो जैसे ही ब्लू मैं बोलता हूँ, मुझे सर्फ या रेन आता है। टेल मी वन मोर प्रोडक्ट, टेल मी वन मोर प्रोडक्ट। There are very few people responding. This session is entirely about understanding, communicating your ideas. I want more people to respond. Anyone? हार्पिक या आपके जो बाथरूम क्लीनर्स होता है, मोस्ट ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट्स इज ब्लू। चिप डिजाइन के एडवर्टाइजमेंट हमारे न्यूज टीवी में बहुत कम आते हैं, बट चिप डिजाइन इज आल्सो अ गुड एग्जांपल, बिकॉज़ उसके बहुत सारे चिप डिजाइन के बैकग्राउंड ब्लू कलर के होते हैं। ओके, सो इफ आई एम डिजाइनिंग अ एल्डरली पेशेंट केयर सिस्टम, एक्वागार्ड, एक्वागार्ड इज अ वेरी गुड एग्जांपल। So in all those examples there is something which is common है। जैसे ही मैं उस प्रोडक्ट के बता रहा हूँ, I always include a person whose opinion matters the most। एक्वागार्ड के अंदर में या आपके एक्वागार्ड के अंदर में किसकी ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट रहती है? एक डॉक्टर की। तो डॉक्टर जरूर रहेगा उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर में, या एक सीनियर पर्सन जो बोले भाई मेरी बात मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, मैंने जो बोला वो फाइनल। ठीक है, सर्फ में हाउस वाइफ्स की चलती है, तो हाउस वाइफ दिखाएंगे, और एक व्यक्ति कोट पहना हुआ दिखाएंगे, हमेशा दिखाएंगे। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंट केयर, okay, will my statement be sufficient? No, my statement will not be sufficient. I have missed a fundamental point, that I am connecting these people with professionals. I am connecting, so that information is missing in that list. I have to make sure that I will connect these registered people with authentic or well-established healthcare personnel. Okay, so this is, although I assumed, okay, of course, भाई मैं alert generate कर रहा हूँ, मैं detection कर रहा हूँ, I am not medically expert people, of course there will be doctors. No, it's not like that. You have to
specify very clearly, because अगर मैंने वो स्पेसिफाई नहीं किया तो मेरे वेब पेज के अंदर में बनाते समय मुझे किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है. अगर इफ आई मेक अ वेबसाइट जस्ट बेस्ड ऑन दिस कंटेंट, आई डोंट नीड टू collect the data of doctors, and because of that I have reduced my workload a lot. But if I include that in my point that I will connect with you, then before my making my prototype I should have something in my mind that I will use this process to connect with doctors. If I am making a prototype or a web page to promote AquaGuard, I must have some way of connecting the customer with the designated distributor or the commercial people. If I am making a website for chip design, I must have some way to connect the designers or the people who are going to use my chip design with actual manufacturers. If I am designing a web page for electric chargers, I must have a way to connect the people or the manufacturer with the people who give certification for these products. मुझे उनका भी ध्यान रखना है. मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं जस्ट रैंडमली नहीं बोल सकता हूं कि ये मेरी सर्विस बेस्ट है. आई नीड टू प्रूव दैट आई रियली एम गुड. ओके, सो with this I end my this session, and I request everybody, we are going to go on a small break now. वही हमारा जो चीज हमने मिस कर दी थी, लंच ब्रेक, हम वही करने जा रहे हैं अभी, लंच ब्रेक. What I request from all the participants is that the idea that you have to, now you go back to that list I had sent you earlier in the morning. Now you go back and see, okay, मैंने जो मेरे दिमाग में एक प्रोटोटाइप था और यहाँ पे एक लिस्ट है. Do I want to change my design or I will stick to the design? What I expect from everybody in the next section is everybody must have some write-up of what their website will offer for a particular product. So if I'm making a website for elderly patient care, I will have a write-up what services my website will provide. If I'm going to make a website for motor control equipments, I should have a write-up, okay, what my web page services will provide for the promotion of that product. Okay, आप सबको, और उसका तरीका क्या है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. यू ओनली हैव टू गो टू जेमिनी एंड राइट अ वेरी सिंपल प्रॉम्प्ट. मैं आखिरी बार फिर से आपको दिखाता हूं. Please, somebody share one more project idea with me apart from these. Okay, we'll check with AquaGuard. Okay, we'll check with AquaGuard. I think everybody can see my screen. I want to design a web page to promote the product AquaGuard. Suggest the list of services my web page or website can offer for the promotion of the product. Everybody can see I have made spelling mistake. Everybody can see I have made a spelling mistake. Website की spelling wrong है. Don't worry about that. आप उसको enter करिए. Don't worry about spelling mistakes. You don't have to be accurate with AI. You don't have to be accurate. You just have to be pertinent. आपको relevance होना चाहिए. Accuracy की अभी जरूरत नहीं है. So here is the list of services that my website must contain to promote AquaGuard water purifiers. ठीक है, ये एक मुझे लिस्ट मिल जाती है. So for all the participants must have this list with them. So copy paste करके एक word document में आप रखिएगा. ठीक है? Any questions? There are 62 participants. I expect 62, either 62 questions or 61. Somebody has immediately left.
They don't want to write no question, sir. Okay, somebody has come back. Okay, so either you write no question, sir. I want to see 62 statements. No question, sir, or some question. Any question, I don't mind. No questions. Okay. One. See, I am trying to follow what we discussed. That we आप लोगों ने बोला कि सर हिंदी में बोलिए, किसी ने बोला इंग्लिश में बोलिए. I am trying to match both. So आप जो बोल रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप करिए. Please communicate. One more thing, if you find one of your friend working on the same product, please collaborate with them. They will type something for the product A, you will also get some result for product A. Compare what is the services Gemini said for that and what they said for you. You can merge them and make one single document. Doesn't matter. More information you will have, better your design will be. More you will have to spend less and less energy later on. How would we compete with other companies in this product and take market share? Okay, the more relevant you are, see, most of the people think that just the marketing will help me to solve my problem. It doesn't work like that. The more relevant you are to a particular solution, the more cost effective you are to a particular solution, you take the market share. Okay, for example, when dalda ghee was introduced in India, absolutely everybody rejected it. People said that that is not a safe ghee, से body खराब होती है, and everybody went out of their way to reject it. But over the time, dalda stick to their strength, making edible oils at a low cost. So जब वो घी महंगा होने लग गया, तो डालडा प्रोमिनेंट होने लग गया. और आज आप जब बाजार में जाते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है मुझे घी की चाहिए या डालडा की चाहिए. So if you have some idea, you think about its relevance. Sometimes the cost can be more, but it is more relevant to a particular user. Right now in India, we have electric cars, okay, but उसके चार्जिंग स्टेशन नहीं है. तो हमारे यहाँ कौन सी गाड़ियां फेमस हो गई? थ्री व्हीलर्स. थ्री व्हीलर्स के अंदर में पुराने वाले बैटरियां लगी हुई हैं और उनको एक मोटर से चला रहे हैं. बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन. तो हमारे यहाँ थ्री व्हीलर्स पॉपुलर हो गए. हिंदुस्तान और ऐसे छोटे देश जहां पे बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, उनको छोड़ के बाकी दुनिया में कहीं पे भी थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक कार्स के है ही नहीं. We are the only unique population which is supported because that's what we need right now. So the answer to this question is we can compete with any company if your solution is pertinent, cost effective and easily accessible. Third point, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिलता है तो लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे rather than something else. Any more questions, please? Thank you, ma'am. It's my pleasure. Please go ahead and ask some questions. To all the faculty members, okay, in 2019, government of, I have already said about this. In 2019, before 2019, none of the faculty members, whether they are from government engineering colleges, government institutes or private institutes, a faculty member is not allowed to engage in any financial activity apart from teaching. They were simply not allowed. In 2019, Government of India issued a policy called as National Innovation and Startup Policy, NISP. In that, it is very clearly stated that a faculty member who designs a prototype or designs a system with the students, they will not get the salary initially, but if that product becomes popular, whatever is the earning from that product can be given to the faculty member. This is a very great
opportunity for all the faculty members. If you have a certain prototype in your mind, but you are not able to implement because of your busy schedule, make a group with students, explain your ideas to them. They will help you to implement and monetize it. And then based on your input to the students, you can earn some money. It's not about earning money right now. It's about the process. Once you have established that process, once you have done it, once the faculty and the student have implemented something, that will become a role models for future generation. Okay. So any faculty member who has a question regarding prototyping or even the process of prototyping or this in NISP, please ask me during one of the sessions. I will be very glad to answer them. The reason is I belong to industry, so I have much more kind of inclination to collaborate with people from academic institutes to develop prototypes. I'm still waiting for a lot of people to answer. I request the chairperson of this session to conclude this session. And sir, if I make a prototype of product, how to introduce with people? That's a very, very good question. There are three parts in any manufacturing unit. There are three parts. First is manufacturing, marketing. First is manufacturing, second is marketing, third is sales. Never mix three of them. They are three different entities. So till you make a product, you are in the marketing phase, manufacturing phase. अब आपको उसको मार्केट करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है आप उसको फिजिकली लोगों को दो और उनके वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आपका आप एक बहुत छोटी पॉपुलेशन को देते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो उस प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आपको फीडबैक देते हैं या आपके सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बन जाते हैं. पहला. दूसरा, यू स्पेंड मनी इन एडवर्टाइजमेंट. ओके, एंड यू एक जनरल एडवर्टाइजमेंट होता है और एक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होता है. You approach the people who are potential buyers of this product on a larger scale. सिर्फ एक छोटे लोकेलिटी में ना हो के आप बड़े डेमोग्राफिक को ऑफर करने की कोशिश करते हैं, which is sometimes costly. And the third part is कि you use this product as a design product or a sample part of some other product. ठीक है. जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बनाया एक्वा गार्ड का ही मैंने एक सोल्यूशन बनाया. मैं एक्वा गार्ड को का या तो अपने आसपास के लोगों को दे सकता हूँ, उसका एडवर्टाइजमेंट करा सकता हूँ. तीसरा तरीका कि मैं ये जो साफ पानी है ये हॉस्पिटल्स में लगाऊं और हॉस्पिटल्स में लगाने के बाद सबको ये बोलूं कि भाई तुम्हारी जो तबीयत खराब जो ठीक हो रही है उसमें एक कंट्रीब्यूशन ये साफ पानी का भी है. तो व्हेन दे गो बैक होम, they will be interested in that product. This is targeted marketing. फिर सेल्स के बाद में जो आपकी मार्केटिंग होती है वो तो that is a very different aspect. आप प्रोटोटाइप को भी मार्केट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट हो. प्रोटोटाइप को भी मार्केट कर सकते हैं. अभी आपके जो ये पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में जो वीसी सर ने कहा था, यही स्टेटमेंट कहा था कि अगर आप प्रोटोटाइप बनाते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे उसको प्रोडक्ट बनाने में और साथ में उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए. तो ये जो हम आज 2 दिन में करने वाले हैं, आप अगर अच्छे प्रोटोटाइप्स बनाते हैं तो आप ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज अयोध्या और रायपुर दोनों में ही यूनिवर्सिटीज आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी डेवलपमेंट के लिए भी और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी. I will share my किसी भी व्यक्ति को
किसी ने कोई अच्छा प्रोटोटाइप बनाया है एंड दे वांट टू गेट इन टच विद मी, INKOR Technologies Raipur or Modern Tech South Korea, you are most welcome. I have shared my email ID. Send me the details of your prototype. We'll work with you. There is absolutely no problem to that. How do we ensure that our prototypes are reliable? Now that comes in the testing part. That's a phase of your prototyping. You have to define what are your achievables. Like you have to say, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपका एंड प्रोडक्ट क्या चीज सर्व करना चाहिए और उस रिजल्ट के आप कितने करीब पहुंच सकते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिंग. जैसे हम लोग ईवी चार्जेस बनाते हैं, ईवी चार्जेस बनाने के बाद में अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड बना के रखे हैं. भाई ये आपकी जो ईवी कार है, आपके जो ईवी स्टेशन है, जो चार्जिंग स्टेशन है, अगर बहुत टेम्परेचर बढ़ गया तो जलना नहीं चाहिए. गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बनाया कि भाई अगर बरसात के नीचे में ये रखा हुआ है तो उसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, हम इन स्टैंडर्डाइजेशन के जो टेस्टिंग वाली जगह है वहां पे ले जाते हैं और वो लोग टेस्ट करके हमको एक सर्टिफिकेट देते हैं. ठीक है, ये हो गया सवाल कि भाई हम टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं. अब आपने क्वेश्चन पूछा है हाउ टू एंश्योर करने के लिए यू मस्ट में आप पहला लो फिडेलिटी डिजाइन बनाने के बाद में हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाएंगे. देन ओनली यू कैन एंश्योर दैट योर प्रोटोटाइप्स आर रिलायबल. आप जितनी ज्यादा डिटेल और जितना ज्यादा फीडबैक यूज करेंगे अपने डेवलपमेंट साइकिल में, उतना ज्यादा आपका प्रोटोटाइप रिलायबल होगा. द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट the possible inputs and the outcome of that possible input, उतना ज्यादा रिलायबल होता है. अनफॉर्चुनेटली कोई भी डिजाइनर दुनिया के सारे पॉसिबल इनपुट पैटर्न नहीं सोच सकता. इसीलिए ऐसे लोगों को दीजिए जिनको बिल्कुल टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं हो, वो आपको 10 नए तरीके बता देंगे इनपुट देने के. जैसे फॉर एग्जांपल, आई राइट अ कोड of adding two integer numbers. I have written a code to find the greatest of two numbers. I guarantee you this thing that one person will enter two numbers same. तो मुझे पता चला है भाई ऐसे लोग भी हैं तो दो नंबर सेम एंटर करेंगे, तो मुझे मेरे को डिजाइन को वैसे करना पड़ेगा. मैं खुद ही करता था ऐसा. मेरे स्टूडेंट्स प्रोग्राम लिखते थे तो मैं ऐसे ऐसे इनपुट सोच के इंसर्ट करता था जो फॉल्ट कंडीशंस होते थे. अगर डिजाइन उसमें चल जाता था तो आई एक्सेप्ट देयर डिजाइन, अगर नहीं चलता था तो मैं बोलता था फिर डिजाइन करो. 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर बताना है, मैं हर बार 2 नंबर को सेम डाल देता था. वो लोग कोड लिखते थे, मैं उसमें नेगेटिव नंबर डाल देता था. इंटीजर की तरह डिक्लेयर कर रहे होते थे तो फेल हो जाते थे, अनसाइंड की तरह डिक्लेयर कर देते थे भाई फेल हो जाते थे. मैं टेक्स्ट एंटर कर देता था, फेल हो जाते थे. मैं पूछता था भाई तुमने बोला कहाँ कि टेक्स्ट एंटर नहीं करना है, बोलो बताओ उसके अंदर में कमांड लिख के आना चाहिए. तो दिस इज मेरा फीडबैक हम लोग टेस्ट कर रहे थे. अभी हम इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग स्टेशन के लिए टेस्ट कर रहे थे, साउथ कोरिया में हो रही थी. लिटरली एक शावर के नीचे वो उसको रख दिए थे हमने, वहां के टेस्टिंग यूनिट ने उसको यूनिट को कि भाई बरसात में कैसे करेगा काम. तो उसके ऊपर हमने एक वो लगा दिया, एक शेड जैसा लगा दिया कि भाई पानी इसके अंदर जाएगा नहीं. दिस इज हाउ यू डू मेक योर डिजाइन्स रिलायबल. एनी मोर क्वेश्चंस? सर मोर फीडबैक? सर एक क्वेश्चन था. हेलो. Okay, then I request the session chair to so that we can close this session and we'll come back after lunch if it is okay with everyone. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Geetika Madam, Chairman of the session, for her concluding remarks. Hello, Dr. Ambar. Yes, madam. I think Dr. Geetika is not there. So Okay, you okay. please, Yeah, proceed. Yeah. So we would like to thank the chairman of today's session, Dr. Geetika Srivastava Madam, for chairing the session. And we will also like to thank Dr. Tiwari, who has taken the session very meticulously. Even I was joined throughout.
He has given very good examples, practical examples like Apple and Samsung. And the use of whiteboard was a practical and interactive session, I feel. And I can see that most of the students who have joined initially were continued at the last. He's also motivated the students to ask the question, because this is the platform. चल रहा है आज इनॉग्रल तो बहुत अच्छा हो गया, वैसे सर खुश होगा एकदम। हाँ, मैडम आपका आवाज आ रहा है, आपका माइक चालू है। So I thank Dr. Tiwari for taking a very meticulous session, which is practical enough, and hope the students who have joined will really get their practical hand on the tools what he have taught, and have got understanding about the prototype and process designing. I thank one and all. Again, it's a lunch break right from 1:30 to 2:15, but we are a bit late in the session. So I request you all to take the lunch break and rejoin at 2:15 with the same link. The third session will be ideation technique and concept development. Thank you one and all. Now I request the moderator to begin the session again at 2:15. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so very much. We'll meet again at 2:15. Thank you. Yes, sir. Sure, sir. Thank you. Now, request all the students, they can quit and they can rejoin after the lunch. Thank you.
अरे सारे वीडियो कॉल करे लगे हैं ग्रुप में कट 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 सारे कट कटो नहीं मेरे गुरु जी की आई हैं। कौन गुरुजी? कहाँ जुड़ा जी मान ये मेल ओपन करो। मेलवा तो ओपन है। यार व्हाट्सएप पूरा ज्वाइन तेरह लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। अवैध विश्वविद्यालय की तमाम छात्र छात्राएं। भैया हैं, प्रभात हैं, राघवेंद्र हैं। राघवेंद्र लिखा इफ यू थिंक यू आर बैड देन आई एम योर डैड। हाँ तो मैंने गंदगी में Kindly mute those, someone अगर has तो बुरा their, हो तो बात their आप mic open. कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। ऐसे ऐसे सुमिधा भी है, संदीप भैया हैं। कौन स्मार्ट लड़की के नंबर निकालो फिर मैसेज करो। इधर से आपके कितने फतवा लिखो है। Abhinav Singh, Mr. Abhinav Singh, your mic is on. कहीं का खुला है पहले फतवा माइक माइक पहले का काटो तो काटो काटो काटो।
Okay, we should start the post-lunch session. Kindly ask the other participants who have not joined yet to join immediately. Okay, so welcome to this post-lunch sessions. Now, I request Dr. Hani Durga Prasad Tiwari sir for this session. And in these sessions, as we have seen in the previous sessions regarding the how we make web page tools and Miro and other collaborative platforms. So, welcome to all the participants. And again, we are going to have a great session, interactive sessions in this post-lunch session. So, welcome, Dr. Hani Tiwari sir. Thank you very much, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Let me point out few things at the onset of this session. This session, any of the sessions are not about web page design. If, I've been telling that we will design web pages, we will design web pages. The sessions are not about web page design. The session is about you have a you have an idea in your mind, and what are the steps you're going to take to implement those ideas. We are taking the example of web page design because it is one of the easiest thing that you can do. First, it is something you can do without spending any money. Third, it its output or its implementation is almost immediate. So as soon as you finish prototyping, you have reached very near to the actual design, and you can get feedback and see how your design does in the outer world. Okay, that's why we have taken the example of web page design. In any of the sessions, you will not require to write any kind of code. So I'll stress this again. If you have any friends who are not from technical background, or you have friends which are not from CSC or EC department, please do ask them to join, because they are going to learn something which will be very very easy for them, and they'll be able to showcase that to other people that this is the work we have done. Okay. Okay. So now, as I had already asked everybody initially, that you must choose one product, and we are going to develop will develop one prototype web page for that product. I have already shared. I'll share the comment again that uh, I'm sharing the prompt that you can give to Bard, or any, if you have the membership of ChatGPT or Bard or any AI tool that you, Perplexity, whatever you have the account with. Bard is not the open source, it's free of cost. So of course you can use Bard. So you can give the prompt as we want to make a web page about, for my case, it is elderly care reminder system. Write a few lines about the web page, services we can provide, and a small list of features the web page must provide. This is prompt for Gemini or Bard. You can change the content like elderly care reminder system with your own product, and you will get some response. So I'll share the screen with you. I hope everyone can see the screen now. Okay. Is it visible to everyone?
Okay, so now let me point out a very important point about this prompt. Read the prompt again. You will see I have written, I want to make a web page. Okay. About the elderly care reminder system, write a few lines about the web page. Services we can provide in a small list of feature, the web page. Every time I've said web page, there is a huge difference between web page and a website. Web page means one single page that you will see when you enter the website. Okay, that is called as landing page. I am talking landing page only. I am talking about landing page only. I am not talking about the entire website. I am just talking about the first page that you will see when you make a web page. So I gave this input and Bard gave me the output as the what should I have? Okay. I go one step back. Okay. Let me go one step back and let's think from the list that I had given you earlier. That list contained the names of websites. Okay, that website had the names. You can do one thing. You can say you don't need to keep that name at the end. When you can use that for making prompts, but there's no need to use the same name later on. You can change it. Okay, so coming back to our design, I hope everybody has done this already. Everybody has already done this, and everybody has generated some list of activities. I request somebody, I request everyone that please share the name of the product and what is the response you got from the Gemini. Please share with others. It will not, you will not be able to copy everything, but a part of it will also do. So people can see that, okay, everybody can see what kind of response. I'll do one thing. Okay, see, you can see this response from the Gemini. I will copy the same prompt again. And this time what I'll do is I will no, sorry, stop sharing. So now what I've done is I have logged on to Bard using a different email ID. Okay, the response that you had seen earlier was from a different email ID. All I have done is I have logged in with a different account and I've given the same prompt to Gemini. Okay. You will find that although there are a lot of similarities in the response I have got, there are also subtle small differences. So it does not matter if two people are choosing the same topic. If it is quite possible that two people will get two different responses. That's why I'm asking the students to write the name of the product they have chosen and what response did they get from the Gemini. Just share it with us. Somebody can share it with us. This is an interactive session, so you need to do these activities with me. If you're facing some problem, bring that problem also on the forum, so people will know what is the okay. Shruti madam has said e-consultation for mental health target audience. Okay, that's very good.
So see the difference in the prompt, the result of the two different people. In my case, it gave very specific information that this web page will offer this thing. It did not ask me for some question. Whereas in Shruti madam's case, it posed a question and there was an answer. And so there's a quite a possibility that the people who will get the answers will get in a different format from I do. That's quite possible. That's what prototyping is all about. Even if you ask the same question, you change the way that question is asked, or you change the person who that question is asked, you might get totally different answer, leading to entirely two sets of prototype. I request somebody, more people to share their designs with us. So this will help us to get three very distinctive style. My style, um, I absolutely let me make it clear. I think Shruti madam did not change the prompt, and instead of elderly care reminder system, she gave e-consultation for mental health. That's the only change she did. She got a response in which there was a question and there was an answer. In my case, there were directly solutions. So Shruti madam's design is also perfect or good. My design has its own merits. Both will be useful for us in, but they're two altogether different styles of prototyping. That's why I'm requesting other people also to share what is the response they got. Samida madam has shared the title. So elderly care reminder system, mine and hers was same. Okay, but see the initial response. Yeah, there is a reference for medication, hydration, appointments, social interaction. In my case, it was nothing like that. Okay, so now we have a perfectly good example that there were three people. Two of them gave the same had the same idea, but their prototypes, the information or collected from other people are different. The third person had a different idea, and the way or the architecture of the first information is quite different. Okay, so we have three designs, three approaches, and in each case we have a different information available to us how to proceed further. Now we have some initial information what I am supposed to do. What is the next step, do you think? Oh, very good. Other people have, we want a web page about one. Yes, write it and detail it. Yeah, very good. So now see, Aditya sir changed the prompt a little bit, right? Few lines about web page and detail it. The word I had used was what is the features of the web page. Sir asked, give details about it. So what happened was there is a difference in the way the answer was. In the case of Aditya sir, it gave us the structure of the web page directly. So there will be headline, there will be subheadline. So he has reached to the next stage. In all the previous three cases, my case, Shruti madam's case, and Samida madam's case, we knew what we have to do. How will the structure look like? We did not know. Okay. In case of Aditya sir, he knows what is the structure of my web page will look like. One step ahead, just by changing a very small question. And we will assume that AI represents a set of people. Okay, we're just thinking that. So by changing the questions that we are asking, we are getting different answers, and our design approach will change. Now we want to make a website. We have a rough idea about it. What to do next? Anyone? What to do next? How about this? Sometimes it becomes difficult to type.
someone can unmute their mic and just ask questions. It will become more informative to everyone, more easier to understand. थोड़ा बातचीत करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सेशन. कोई भी एक व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट करे और बताए कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब हमें क्या करना चाहिए. ये अभी मैंने इसके पहले पिछले सेशन में हमने बात करी थी स्टोरी बोर्डिंग, स्केचिंग, ये अलग अलग तरीके का लो फिडेलिटी, हाई फिडेलिटी, वो सब डिस्कस किया था. अभी हम जिस स्टेज पे हैं वो कहाँ पे है? वो स्टोरी लो फिडेलिटी है कि हाई फिडेलिटी, क्या है अभी ये प्रोटोटाइप, क्या है, कौन से स्टेज पे है? What should be the feature of a leg massaging system for people? Okay, that's a very specific question about a product. Okay, so we got a response. The response did not say anything about website because the question did not ask about the websites. So this is another example of a very good, very pertinent question. That okay, मैं directly product के बारे में पूछ रहा हूँ. I don't want to make it. I'm more focused upon the actual device. Okay, this is a very good example. Now, but here we would like to see जो 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 feedback आया है अपने को, how does it help to make the actual system? Okay, that we will see now. Now, as answered by Govind sir, the step we are in right now is a low fidelity system. That's nowhere near to the actual design. We just have some information. We are in the step of conceptualization, and at this point, I can say my design is of low fidelity. Okay, we are in this type of conceptualization. Very good answer. So now, what do you think should be my next step? अगर हम So we should choose the highest priority features for starting. ओके, हमने चूज कर लिया. हमने कुछ फीचर्स देख लिए कि भाई हमने ये करा. ये हम पेन पेपर पे हैं अभी, ठीक है. वो जो स्टेप है कंसेप्चुअलाइजेशन का, हम उस स्टेप पे हैं. उसके बाद कौन सी स्टेप थी कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद? कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद कौन सी स्टेप थी? कंसेप्चुअलाइजेशन हमने पिछले सेशन में भी किया था माइरो के थ्रू, और अभी इंटरेक्शन से भी किया. ये दो स्टेप हो गई कंसेप्चुअलाइजेशन की. थर्ड स्टेप, सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी आती है? इम्प्लीमेंटेशन की, राइट. हमने अपना एक कंसेप्ट बना लिया. आप लोग सबके पास में एक रिटर्न कंटेंट आ गया. आप सबके पास में कंटेंट आ गया कि भाई मेरा वेबसाइट कैसे दिखेगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे दिखेगा, आपके पास आ गया. अब हम इसको यूज करना है, अब मुझे इम्प्लीमेंट करना है. डिजाइन प्रोसेस भी है. हाँ, अभी हम डिजाइन कर सकते हैं. अब प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत लेंदी कोडिंग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है. मैं बहुत लेंदी कोडिंग नहीं करना चाहता हूँ. मैं सिर्फ मेरा आइडिया कैसे दिखेगा मैं अभी वो जानना चाहता हूँ, और दूसरे लोग उसको कैसे, मार्केट उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, ठीक है. तो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स होना चाहिए जिसमें हम आइडिया दे सके और हमको एक रफ ड्राफ्ट मिल जाए. डू यू एग्री? Yes, sir. If you have a system in which you can see some form of your design, right? We would like to see it, right? Yes, sir. So what we will do is I will share. I'm going to share the link of 10 different websites. I am sharing the link of 10 different websites which will take your prompts as input and generate a equivalent website. Listen again. आपने जो अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ना, आपके प्रोजेक्ट से मेरे केस में एल्डरली पेशेंट केयर के लिए मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी ना, मैं इसको प्रॉम्प्ट बना के इन वेबसाइट्स में दूंगा, और ये वेबसाइट मेरे लिए एक इक्विवेलेंट वेब पेज बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इज इट ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू सी? यस सर. ओके, सो अब मैं एक सब जो
जो विक्स है ये पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। विक्स बहुत सारे लोग इसमें यानी इंटरनेशनल लेवल के बनाए जाते हैं। तो मैं इसके अंदर में आप ये हाई लिया करके इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 सेवेंथ नंबर का हे लिया करके है, उसको यूज करो। वो इसलिए यूज करो कि बहुत इस एकदम बहुत सिंपल है। इसको उसको उससे शुरू करता हूँ, ठीक है। आप सब किसी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ओके सो मैंने जो मेरा जो कंटेंट था उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। जो मुझे रिस्पांस मिला था जेमिनी से, मैंने उसको वर्ड को कर लिया था। मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं अकाउंट में नहीं कहता हूँ, पहले बोलता हूँ ओके गेट स्टार्टेड। तो प्लीज एंटर व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन। सो यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट आया, आई विल राइट हेल्थ केयर। आप लोग को दिख रहा नहीं है कि उसकी फॉन्ट बहुत छोटा है, इसलिए हेल्थ केयर मैंने हेल्थ केयर लिखा है यहाँ पे और नेक्स्ट प्रेस कर दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं उसको बोलूं कि नहीं नहीं बस मेरा वेबसाइट बना दे, तो उसको तो बस एक एक ही मेरे को, मैंने गाड़ी में बैठा और बोलता कि मुझे जाना है और मैं बोला मुझसे कुछ पूछ मत बस तू चल दे, तो मेरे को डेस्टिनेशन पे ले जाएगा कि नहीं। इसीलिए इट इज बेटर लेट देम आस्क मी मोर क्वेश्चंस। he ask me more questions I will tell, okay। give a name to your website। अरे यार मैंने जो रिस्पॉन्स पूछा था उसमें तो नाम सोचा ही नहीं अपने एल्डरली पेशेंट केयर के लिए, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था। मैं क्या करूं, आई गो बैक टू जेमिनी, ओके, एंड आई विल राइट suggest some simple names for the web page। suggest 20 names, ठीक है। अब देखिए कंसेप्चुअलाइजेशन के समय हमने नाम नहीं सोचे थे क्या हमने हमने नहीं सोचे थे। परंतु नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम इम्प्लीमेंटेशन में गए हमको ध्यान आ रहे ये तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था जो हमने मिस कर दिया। हमने वापस आए अपने, फिर दोस्तों को बैठाया, बोले भैया अपने अपने पसंद का नाम बताओ। तो सबने अपने अपने पसंद के नाम बताए। अब देखिए हर नाम का अपना सिग्निफिकेंस है। जहां जब भी मैं रिमाइंडर शब्द यूज कर रहा हूँ तो इट लुक्स लाइक कि बस मैं रिमाइंडर भेजने वाला हूँ। तो मैं क्या बोलते हैं रोजमर्रा वाले शब्द यूज कर रहा हूँ तो मतलब ये है कि वो रोज रोज आपसे कांटेक्ट करेगा। तो हर नाम का अपना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। मैंने जो कल लिस्ट जनरेट की थी उसमें मुझे एक नाम सजेस्ट किया गया था इजी केयर, विच इज वेरी नियर टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मुझे एक बहुत सिंपल सिस्टम बनाना है एंड केयर और इजी दोनों शब्द आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको इजी केयर नाम दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का। और आगे बढ़ता हूँ। डू यू हैव अ स्लोगन? हाँ भैया मेरे पास मैं काम करता हूँ सजेस्ट स्लोगन्स। अब देखो मेरे रिस्पॉन्सेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने बहुत डिस्क्रिप्टिव दिया था, अब मैंने रिस्पॉन्स और छोटा सॉरी प्रॉम्प्ट छोटा कर दिया। अब यहाँ तीसरा और सजेस्ट स्लोगन्स कितने, सिर्फ 20 सजेस्ट स्लोगन 20, क्या लिखता लिख दिया। मैं डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ पर प्रॉम्प्ट समझ देते समय बहुत ज्यादा डिटेल ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी स्टेप में आप में से किसी को भी कोई परेशानी आती है तो प्लीज तुरंत रोक के पूछेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं ये अब क्रूशियल स्टेप्स हो रहे हैं, ये आपके पूरा डिजाइन को इफेक्ट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे को बहुत सारे स्लोगन सजेस्ट करे गए हैं
उनमें से मैं ऐसा चूज करना चाहता हूँ जो समझ सिंपल हो और मेरे टारगेट ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, मेरे टारगेट ऑडियंस कौन कौन से हैं? सीनियर सिटीजन्स हैं, ठीक है, और उनकी फैमिलीज हैं, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट डेली रूटीन, इट्स अबाउट द the way we will help everybody. Okay, इनमें से okay, अगर मैं ये बताता हूँ ऑन टाइम सीनियर्स, स्टेइंग ऑर्गेनाइज, स्टेइंग हेल्दी, ठीक है, तो इससे इट डजंट से दैट द थिंग्स आर इजी, इट डज नॉट कन्वे द मीनिंग इजी। तो मैं इसमें देखता हूँ मेरे जो वेब पेज का जो टाइटल है उसके आसपास में कोई है क्या, तो यहाँ पे मेरे को दिखा डेली असिस्ट मेकिंग एवरी डे इजियर, दिस इज वेरी नियर टू माई टाइटल, so let me choose that one. Okay, अब भाई जो आप लोग वेबसाइट्स होती है ना, वेबसाइट्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वेबसाइट का नाम और दूसरा होता है वेबसाइट कहाँ स्टोर है। दो उसको होस्टिंग, उसको डोमेन, जो नाम रहता है उसको डोमेन नेम बोलते हैं और जहाँ रखा था उसको होस्टिंग बोलते हैं। दोनों पे ही पैसे लगते हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं खर्च करना मेरे को, तो उन्होंने मुझे कि चूज अ डोमेन इफ यू ऑलरेडी ओन अ डोमेन नेम, आई डोंट ओन अ डोमेन, मेरे पास नहीं है भाई। तो मैं जो इसके नीचे में ऑलरेडी नाम लिख के आ रहा है मैं बोलूंगा भाई तू वही चूज कर दे, तू फ्री वाले सर्विस दे रहा है, दे दे। अब एल्डरली पेशेंट केयर में हमने कहीं सोचा था कि हमने एक प्रोडक्ट देनी है सर्विस, हमने अपने कंसेप्चुअलाइजेशन में कहीं बात करी थी क्या? जो अपने अपन ने, मैंने आपको एक दिखाया था ना प्रॉम्प्ट कि एल्डरली पेशेंट केयर में अपन ने कभी बात करी थी प्रोडक्ट दूंगा या सर्विस? मैंने कहीं डिस्कस ही नहीं किया। मैंने जस्ट बोला कि भाई वो वेब पेज का फीचर मांगा था, एक्चुअल सर्विस का नहीं मांगा था। तो अब मेरे को ध्यान में, अरे यार मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया, मेरे को सिर्फ सर्विस देनी है कि प्रोडक्ट। तो इस समय में मैं क्या सोच सकती हूँ भाई, आगे जाके क्वाइट पॉसिबल कि मैं ऐसा सिस्टम बना लूं जहां कुछ प्रोडक्ट भी बेच पाऊं। तो मैं मेरे वेब पेज के अंदर में ऑलरेडी वो प्रोविजन होता है, प्रोटोटाइप बनाते समय अगर ऐसा कोई एस्पेक्ट है जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बट उसका आगे जाकर स्कोप रहेगा, तो उसका प्रोविजन बना के चलिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो पैंट बनाने वाले हैं उसके अंदर 4 जेब लगने हैं, तो उतने मैचिंग का कपड़ा बचा के रखिए, उसको वेस्ट मत करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक ये बनाना है, हेल्थ केयर का बैंड बनाना है, अभी केवल हार्ट बीट देखता है परंतु बाद में ये ब्लड प्रेशर भी देखेगा, तो उसके लिए आपको आपके सर्किट के यहाँ पे जगह बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रोडक्ट बेचूंगा कि नहीं, सर्विस तो मैं बेच ही रहा था कि भाई लोगों से कनेक्ट करूंगा, ये सब सोच रहे थे, और अभी मैं कर देता हूँ बोथ। डू यू वांट अबाउट सेक्शन इन योर पेज? भाई मुझे तो मेरे बारे में बताना ही पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट बनाओ या कोई भी वेब पेज बनाओ, लोग देखते हैं ना भाई ये है कौन, तो हाँ भाई मुझे अबाउट वेब पेज चाहिए ही चाहिए। डू यू वांट अ फीचर सेक्शन? भाई फीचर्स का मतलब क्या है कि भाई जो मेरे प्रोडक्ट को हाईलाइट करे, और हमारा टारगेट क्या है, हम एल्डरली पेशेंट केयर की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसका एडवांटेज जैसे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता ही चलना चाहिए। यस, आई वांट इट। ओके, हेलो, इन हियर, एवरीवन हियर?
Yes, sir. हाँ, I ask before we proceed ahead, I want to ask, आप में से किसी ने वेब पेज बनाया है आज तक? किसी ने बनाया है तो टाइप करिए, वेबसाइट का लिंक शेयर करिए। देखिए, हम वेब पेज बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं। हमने नाम डिसाइड कर लिया, डोमेन डिसाइड कर लिया, हमने कंटेंट डिसाइड कर लिया। कविता मैम ने बनाई है। मैम प्लीज आपकी वेबसाइट शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। और हम हम उस पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हैं, धीरे 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 हम अपने असली डिजाइन के पास पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लीज ध्यान रखिएगा, आपने कितनी एनर्जी स्पेंड करी है इस पे, उस एनर्जी के कंपैरिजन में आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, उसका मेजर होना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी डिटेल बेस्ट होती है किसी भी, जितना ज्यादा डिटेल उतना ज्यादा अच्छा आउटपुट। So now the next question is, do you want to place to display a few photos? Yes, we do want to show certain photos. अब टेस्टिमोनियल्स क्या होती है? टेस्टिमोनियल जब लोग बोलते हैं ना, भाई अरे आपकी आपकी वेबसाइट तो गजब है, आप तो बहुत, वो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। कोई दूसरा व्यक्ति आके बोलता है ना, आपका सामान तो बहुत ही अच्छा था, उसका लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। तो यस, वी डेफिनेटली नीड सम टेस्टिमोनियल। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाए, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाए, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी हो, आपकी बताई हुई बात और किसी और का बताई हुई बात में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। तो अगर आप प्रोटोटाइप का एडवर्टाइजमेंट या दूसरों से कनेक्ट करने वाला जो है, जिसके अंदर में थर्ड पार्टी को अगर इन्वॉल्व करके बना रहे हैं, तो आपका डिजाइन बहुत अच्छा एक्सेप्ट होने वाला है आगे जाके। डू यू वांट टू प्लेस टू हाईलाइट सम ऑफ योर टीम मेंबर्स? भाई अभी तो फिलहाल मेरे पास लोगों का एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, बट हाँ, मुझे प्रोविजन बना के रखना है। बाद में यहाँ पे मैं डॉक्टरों की भी फोटो डाल दूंगा और लोगों के भी फोटो डाल दूंगा। ओके ठीक है, जो जो तो भाई तू मेरे को, भाई अभी तो फ्री में तुम कर रहे हो तो मैं करते जाता हूँ। डू यू वांट टू फाउंड कनेक्ट विथ मोर पीपल? यस भैया, मैं कनेक्ट वाला करना चाहूंगा, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। ठीक है, डू यू हैव अ लोगो टू अपलोड? अभी तो फिलहाल नहीं है अपने पास, हम लोगो रख सकते हैं, तो अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, डू यू हैव अ वेबसाइट विद सम टेक्स्ट? अभी मेरे पास कोई, हम एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ हमारे पास वेबसाइट नहीं है, तो हम यूआरएल हम नहीं दे सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम जो एल्डरली पेशेंट केयर के बारे में मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिख के रखा था, मैं उसको कॉपी कर देता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने क्या किया, जो एल्डरली पेशेंट केयर का मैंने कंटेंट पहले जनरेट किया था ना जेमिनी से, मैंने उसको यहाँ कॉपी कर दिया। देखते हैं भाई, ये मेरे पास नहीं था। वो बोल रहा है कि मैं कुछ और क्वेश्चन है, नहीं भैया पूछ ले भाई, और क्वेश्चन पूछ ले। आई वो, अब देखो यहाँ पे तीन चीजें हैं, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, इक्वली प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ओके मैं दोनों चूज कर लेता हूँ, प्रोफेशनली भी और फ्रेंडली भी। This is not always true. Okay, if you are designing some product for industry, it has to be more professional. Easy to use नहीं होगा, चल जाएगा, professional होना चाहिए। If you are designing it for people with limited or less technical knowledge, it has to be more friendly. बहुत professional नहीं हुआ तो चल जाएगा। अभी मैं किसके लिए बना रहा हूँ? मैं elderly patient के लिए बना रहा हूँ, जहाँ friendliness is a very important key aspect, तो मैं उसको more friendly चूज करता हूँ। Do you want an image about yes section? Yes. रजाक सर ने पूरा स्टेप कर चुके हैं और वो आगे जाके उन्होंने एक वेबसाइट बना ली है अपने। थोड़ी देर के बाद में हम वो वेबसाइट ओपन करेंगे और देखेंगे सर की वेबसाइट कैसे दिखती है। हम भी जल्दी से दौड़ के उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी फीचर्स, कितना रखना चाहता है? ये सारी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। हमें काम करते हो कि भाई डिफॉल्ट वैल्यूज पे हम डिफॉल्ट वैल्यूज सब यूज करते जाते हैं हम ज्यादा। Do you want to show a profile image for the people who gave? भैया ठीक है, तो वो भी दिखा दें। Let's see the best they can offer. Social media ठीक है। Do you want contact us? ठीक है। हम do you want that form? Next हम, हाँ continue। तो now यहाँ पे मुझे अपना email एड्रेस डालना है, तो drhtt.raipur@gmail.com।
और आई एम नॉट अ रोबोट फिनिश। नाउ अभी तक हमारी मेहनत क्या थी इस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक हमारी मेहनत थी, हमने कंटेंट इकट्ठा किया था। अब हम जो है अपन ने जो कंटेंट इकट्ठा किया था उसके बेसिस पे हमने एक एआई टूल को दिया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हमने सिर्फ इनपुट दिया है और उसमें से भी इनपुट एक बहुत छोटा पार्ट हमने दिया, बाकी सब उसको क्वेश्चन को हमने डिफॉल्ट 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 वैल्यूज यूज करी है। ठीक है, ये देखिए, ये वेबसाइट जो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये रजाक सर की बनाई हुई वेबसाइट है। ओके, ये देखिए, जो रजाक सर ने जो टॉपिक, मेरे ख्याल से सर रजाक सर से रिक्वेस्ट है, आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए लिखा था प्लीज वो भी हमारे साथ शेयर करिए। ये किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनाई गई है, प्लीज वो भी हमारे साथ शेयर करें। और ये जो वेबसाइट अभी अपन देख रहे हैं, ये वेबसाइट वो है जो मैंने अभी बनाई है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों की भी वेबसाइट बनी होगी। प्लीज सब लोग अपनी वेबसाइट शेयर करिए, आपको कैसा आपका आउटपुट आया, हमें देखने में बहुत इंटरेस्ट है। ये देखिए, जो हमने जो हमने डेटा दिया था उसके बेस पे हमारे कंटेंट तैयार हो गए, है ना। हम एक और माइंड वेल कंसेप्ट को देखेंगे, श्रुति मैडम की वेबसाइट देखेंगे अपन, सतीश सर की वेबसाइट देखेंगे। ये देखिए, स्ट्रक्चर सबका सेम है, सारी वेबसाइट्स का, इनफैक्ट कुछ इमेजेस भी सेम है, पर हमें को स्ट्रक्चर तो मिल ही गया ना। हमें हमारे प्रोटोटाइप कैसे दिखने वाली वो तो हमें पता दिख ही रहा है ना। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, ये सतीश सर की है, सतीश सर ने भी इजी केयर चूज किया था, मैंने भी चीज चूज किया था, हम दोनों की वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज दूसरी है और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज स्लाइटली डिफरेंट, है ना। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर कितना डिफरेंट है और मेरी वेबसाइट का डिफरेंट। मैं अपने इसको सेव कर लेता हूँ डिजाइन को, आप लोग भी अपने डिजाइन सेव कर लीजिएगा। Now, as for the people who have never designed a web page till now,
how difficult on the scale of 1 to 10, how do you say how difficult it was for you? On the scale of 1 to 10, how difficult it was for you? What was our final goal? We want to make a website. Okay, we want to make a website on a particular product. Okay, आज सुबेरे आपको सेशन के में प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया और अभी कुछ घंटों में आपकी बेसिक डिफॉल्ट वेबसाइट तैयार हो गई. ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ टाइम आपने स्पेंड किया उसके कंपैरिजन में ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उसको आप कंपेयर करना ऑन द डिफिकल्टी स्केल. ये क्या है? 0 to 10 ले लीजिए, 10 being very difficult, 0 being very less, no difficulty at all. How do you rate it? Why is this question important? Because the I will not say 0%. Let me tell you why. Because you did spend some time on writing that prompt, right? Never ignore any difficulty level. Never ignore. आपने prompt दिया, जरूरी नहीं कि पहली बार आपको prompt का आंसर सही आ जाए, आपको फिर से prompt लिखना पड़ सकता है. तो हम 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेते हैं. अब हमको ये आसान क्यों हो गया? क्योंकि इसके पहले हमने एक बोर्ड के ऊपर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी. हमने एक प्रोडक्ट चूज कर लिया, हमने एक रिसोर्स से प्रोडक्ट चूज किया, हमने उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिया. हम दैट वाज अ फॉर्म ऑफ प्रोटोटाइपिंग, राइट? तो हम प्रोटोटाइपिंग करके एक एंड प्रोडक्ट पे पहुंचना. इसके बनिस्पत अगर मैं आपके पास आता और आपको बोलता है एक वेब पेज बना दो मेरे को एल्डरली पेशेंट करने के लिए, तो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर सोचते सोचने में ही कितना ज्यादा समय लग गया होता है. कई महीने के नहीं तो कम से कम दिन तो लग गए होते हैं, है ना? दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग. नाउ आपके पास लिंक आ गए, आपके आपके वेबसाइट्स की आ गई. उन्होंने पूछेंगे कि आप उसको सेव कर लीजिए, तो आप अपने अपने वेबसाइट्स को सेव कर लीजिएगा. ठीक है, वो सेव करने की क्या जरूरत है? Why do we want to save our website? Why do we want to save our website? What was the next step of after implementation? What was the next step? What was Edit it for saving. If we save, then only can you modify it. Yes, but उसके पहले मॉडिफिकेशन के पहले हमने एक स्टेप था कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, फिर तीसरा स्टेप टेस्टिंग एंड फीडबैक, राइट? अब टेस्टिंग कौन करेगा हमारी वेबसाइट की? जिन्हें हम ये वेबसाइट शेयर करेंगे, है ना? तो आप लोग जब अपना वेबसाइट शेयर करेंगे तो ये जो वेबसाइट्स हैं आपकी वो सेव हो जाएंगी. ठीक है, अब ये जो वेबसाइट आपने आज मेहनत से बनाई है, इसको आप किसके साथ शेयर करेंगे? कौन होंगे आपके ऑडियंस? इजीएस्ट ऑडियंस कौन होगा? फैमिली एल्डर पर्सन. बस फैमिली एल्डर नहीं, जो फैकल्टी हैं उनके लिए उनके स्पाउस और बच्चे हो गए, जो बच्चे हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स हो गए. दैट इज द बेस्ट ऑडियंस यू विल गेट एट दिस पॉइंट, राइट? सो व्हाट आई रिकमेंड एवरीबॉडी इज, ये जो लिंक्स हैं इनका आप कॉपी कर लीजिए और अपने जो साथ के लोग हैं उनके साथ शेयर करिए एंड गेट अ फीडबैक. टेल देम कि आई मेड अ वेबसाइट, व्हाट इज योर कमेंट? कलेक्ट, डोंट वरी. हम बोलेंगे भैया आप बताइएगा, हमारे इसके अंदर में एक वो हुआ था, सेशन हुआ था जिसके तहत हमने ये बनाया. ठीक है, अब ये तो हो गया एक पर्टिकुलर डिजाइन. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर वेबसाइट्स? Okay, so what I'll do is I will take example of another website, Wix में इसलिए रुका हुआ था क्योंकि Wix में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ती है, पर Wix आपका एक काइंड ऑफ बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है. Wix आपको दोनों तरीके की सर्विस देता है, पेड सर्विस और फ्री सर्विस दोनों.
अगर आपका प्रोटोटाइप अच्छा बन जाता है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो उसको पेड सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप उसको लेजिटिमेट तरीके से बिजनेस की तरह डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने प्रोटोटाइपिंग देखी, इससे आप कैसे मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं, इससे मनी कैसे जनरेट कर सकते हैं? इजिएस्ट वे आपको जो दिमाग में आता है, कैसे जनरेट कर सकते हैं? ऐड के जरिए। जी, ऐड। हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एक्चुअली गूगल आपको अलाउ करता है कि आप अपना वेबसाइट गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर दीजिए, गूगल एडवर्टाइजमेंट प्लेस करेगा और आपको पैसे मिलेंगे, पर उसके लिए थोड़ा अप्रूवल प्रोसेस रहता है, कभी जल्दी होता है, कभी नहीं होता है। उसको अगर अपन नहीं भी कंसिडर करें तो एज इज इट इज, आपके पास जो आपका वेब पेज है, आप उसको उसके अंदर दूसरों से लेके एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं और तुरंत के तुरंत आप बहुत छोटा अमाउंट रखिए, 200 रुपये महीना, 300 रुपये, छोटा सा अमाउंट रखिए, आपको तुरंत के तुरंत जनरेट होगा। दूसरा, ये जो आपने जिस तरीके से आपने अभी वेबसाइट बनाया, आपके आसपास के जो छोटे बिजनेस वाले हैं, क्या बोलते हैं, हॉकर्स हो गए या कुछ ऐसे लोग हो गए, वो सब लोग कम पैसे में वेब पेज बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि वेब पेज बना दीजिए। छोटे छोटे कैफे होते हैं ना, कैफे होते हैं, होटल्स होती हैं, छोटे छोटे वेंडर्स जो अपना वो करना चाहते हैं। आप में से कितने लोगों को डूमर तराई के बारे में पता है? डूमर तराई में जो बहुत बड़ा अनाज का होलसेल मार्केट है, कितने लोगों को पता है उसके बारे में? वो जो मार्केट है उसके अंदर में इतने सारे लोग, इतने सारे वेंडर्स हैं, आप एक दुकान से दूसरे दुकान में जाएंगे ना तो रेट में डिफरेंस है, आपको ये भी नहीं पता कि कौन से प्रोडक्ट कौन से दुकान वाले रखते हैं। अगर आज के तारीख में कोई उन लोग से जाके सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख के ले आए, इतने आसान तरीके से ये वेब पेज बनाता है और आपके पास वो ऑडियंस है, वही लोग आपको पैसे देने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपको तुरंत के तुरंत आपको पैसा दिलवा सके, तुरंत। ठीक है। अभी मैंने ये मेरा विक्स शुरू होता है, तो मैं आपको विक्स के थ्रू एक डिजाइन बना के बताता हूँ। हाँ, ओके। सो हु आर यू क्रिएटिंग दिस वेबसाइट फॉर? अभी मैं बोलता हूँ फॉर माई सेल्फ, माई बिजनेस और अ फ्रेंड। ओके, स्टार्ट चैट। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो एल्डरली पेशेंट केयर का जो इंफॉर्मेशन थी ना, वही की वही पूरी मैं कॉपी कर देता हूँ और बोलता हूँ देख, टारगेट ऑडियंस कौन सी रहेगी? रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल और पेशेंट्स विद रेगुलर केयर, किड्स। किड्स नहीं लिख सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स। बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं अपन यूज करेंगे, जो अपने को समझ में आती है हम वो यूज करेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। विनाश सर ने भी अपनी वेबसाइट शेयर करी है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ योर वेबसाइट? इसका आंसर हमने पहले ही लिखा था, दिस वेबसाइट जेमिनी से ही जनरेट कराया था अपन ने। दिस वेबसाइट विल बी अवेलेबल फॉर सीकिंग अ रिलायबल यूजर सपोर्ट फॉर द एल्डरली वंस। हम यही कर रहे हैं, हम एक जगह का काम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं।
क्या हमारे के पास कोई डिजाइन वो है? तो हमने क्या करा था, बार्ड से जब हमने फीचर ऑफ वेब पेज पूछा था ना, वो क्वेश्चन जब मैंने लिखा था फीचर ऑफ वेब पेज, तो उस समय बार्ड ने मेरे को वेब पेज के बारे में बताया था, वेब पेज कैसा दिखना होना चाहिए। तो मैं कलर के बारे में नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे को सिंप्लिसिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, तो वो वाली जो चीज है मैंने यहाँ पे दे दी। उसके उसके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं है, उसने पूछा था कलर और लेआउट, मैंने कलर लेआउट नहीं बताया, मैंने कुछ और ही बोल दिया, बट स्टिल नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट स्पेसिफिक ब्रांडिंग एलिमेंट्स डू यू वांट टू प्रोवाइड? तो अब इसके अंदर मैं मुझे क्या चीजें प्रोवाइड करना चाहता हूँ? रिमाइंडर्स, फैमिली कम्युनिकेशन, मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये मैं फीचर्स को ध्यान में रखना चाहता हूँ। भाई भाई मैं जो, देखिए, पेशेंट केयर में पेशेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर करी है, मुझे उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो मेरा एक पॉइंट प्राइवेसी भी है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी भी मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बेच रहा हूँ। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि भाई मोबाइल पे भी अवेलेबल है, ये भी मेरा है। मैं फैमिली कम्युनिकेशन मतलब फैमिली के सभी मेंबर्स को कम्युनिकेट करूंगा, रिमाइंडर दूंगा, ये मेरा यूएसपी बोलते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉम्प्ट, जो जो मुझे प्रॉम्प्ट से आंसर मिले थे, मैं उसी को यूज करूँ, मैं अभी अपना ज्यादा दिमाग ना लगाऊं। व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सिंपल एंड इंट्यूटिव इंटरफेस, कि भाई ये सिंपल बहुत है। अब विक्स और जो पुराने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस था, कोई बता सकता है? ये जो विक्स पूछ रहा है इसमें और पुराने वाले केस में, कोई बता सकता है कि जो क्वेश्चंस अभी विक्स ने पूछे, जो विक्स ने पूछे और जो विक्स हे लिया ने पूछे थे, उन क्वेश्चंस में क्या अंतर है? एनीवन? एनीवन? It is trying to understand our future plans. Yes. And what was Leah trying to do? What was Leah trying to do? Of course, Vix is trying to understand our future plan. What was the previous one? What was it trying to do? It was providing a initial layout for all जी kind of जी, features. बिल्कुल करेक्ट। लिया क्या कर रहा था? लिया मेरे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे रहा था, और विक्स मेरे, मैं इम्प्लीमेंटेशन के पीछे मेरा इंटेंशन क्या है वो बताने की कोशिश कर रहा था। इन प्रीवियस वन इट वाज अबाउट स्ट्रक्चर। वेरी गुड श्रुति मैम, दिस इज अ better statement from my statement. It was trying to understand the structure of my implementation. In this case, it is trying to understand the intent of my implementation. दोनों केस के आउटपुट बहुत डिफरेंट रहने वाले हैं, क्योंकि इस केस में मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया। आई हैव लेफ्ट इट टोटली ऑन द टूल, and in that case I had given the information about the structure. I did not talk too much about what I want to offer, but वो मैंने बोल लिया कि भाई मेरे हिसाब से। That is why I had ranked Hey लिया little down as compared to Wix. Okay, मैंने Wix को, ठीक है। अब विक्स के आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अलग सेटिंग्स रहते हैं। इट टेक्स सर्टेन टाइम, इट टेक्स अबाउट 30-40 मिनट्स। ओके, so we'll do it we can do it later. My intention was to show the difference in the process of prototyping. एक केस में आप स्ट्रक्चर पे डिसाइड कर सकते हैं,
then the responsibility of whether that structure satisfies your original purpose or not lies on you. Or you can proceed in which you focus on what is your intent rather than implementation. At any point of time, you are ready to change the implementation to suit your requirements. ये दो डिस्टिंक्टिव तरीके होते हैं प्रोटोटाइप बनाने के. जो पहला वाला केस है जहां स्ट्रक्चर पे हम ध्यान दे रहे हैं, जनरली वो तब आता है जब हम फाइनेंस के से लिमिटेड होते हैं. हमने ऑलरेडी कंपोनेंट खरीद लिया है, अब हम उसको बहुत नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए हमको जो है उसमें बनाना पड़ेगा. तब वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमने अभी कंपोनेंट नहीं खरीदा या हम जो चीज बनाने वाले हैं उसमें पैसा खर्च नहीं होने वाला है, तो हमको इम्प्लीमेंटेशन की जगह हमको इंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. Understood? So most of the physical implementation or physical prototypes are of the first type, where you focus on the structure, and most of the non-physical implementation like website design or software design or the simulation design, these work on the intent of the output rather than the implementation itself. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Now, I will not do this here right now, but yeah, this is one more web page which uses AI for making web pages. So now I have, in the first session, we discussed about collecting the points for making the website. In the second session, we have seen two different approaches of making a website, which tells us a lot of things about prototyping. Okay. अब हमने एक इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है. अब आज रात को हम अपने इम्प्लीमेंटेशन को लोगों से शेयर करेंगे और उस फीडबैक के बेसिस पे कल सुबेरे हम उसमें चेंजेस लाएंगे. ठीक है. अभी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस इम्प्लीमेंटेशन. राइट नाउ you don't have the complete control over your prototype. This was generated by AI, and AI did some work for you, and because of this you have become little biased towards that structure. Okay. You have become little biased towards that structure which AI has given. So what So if we should have at least one working feature for the people to give their feedback. Yeah, so that's a very good point. Whether your web page don't have a working feature right now, what do you consider as the working feature? Am I able to connect? At this point, the web pages that we have made, they will just test you about the appeal. Okay. तो हमने जो तीसरा एक स्टाइल पढ़ा था प्रोटोटाइपिंग का, विजर्ड ऑफ ऑज वाला, जहां पे लोगों को इंटरफेस दिखता था और आंसर कोई और देता था. अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए. तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जब ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोग उसके फीचर्स और इसके ऊपर कमेंट करेंगे. अब उन फीचर्स के आंसर आप तैयार करके इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. हमने केवल लैंडिंग पेज बनाया अभी, है ना, पहला पेज बनाया, हमने अंदर का स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं अभी, है ना. तो जो अंदर का जो स्ट्रक्चर बनना है, या तो हम पहले पूरा बना ले और फिर लोगों से फीडबैक लें, फिर हमको चेंज करना, तो वो समय लग सकता है. उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम एक एस्थेटिक्स को दिखा के लोगों के फीडबैक ले लें और उन फीडबैक को यूज करके हम नेक्स्ट पेज बनाएं. Isn't it? Will it be easier? Which one do you think will be better?
कि हम पहले पूरा डिजाइन कर लें फिर फीडबैक लें, कि फीडबैक के साथ साथ? व्हाट डू यू थिंक इन द वेब पेज के डिजाइन? दैट्स नॉट ट्रू फॉर एवरी प्रोटोटाइप। मुझे मोटर चलानी है तो मोटर चला के दिखानी ही पड़ेगी, फिर पूछना पड़ेगा, राइट? बिना बिना मोटर चलाए नहीं कर सकते. So now, as madam said, we have to let's try feedback. So now tomorrow what we will do is we will design our own website by our own by ourselves without writing a single line of code, and we will try to incorporate something which is working. Okay, and then we'll see how things go on, right? So what I recommend everybody is using the style what we have done today. Everybody must use at least 2 different platforms and make their website to see the difference. Okay, everybody who has, there are 57 people here, everybody must have 2 different websites. You can use any 2 platforms that I've shared. You can use any 2 platforms I've shared. दो, जब आप जब वेब पेज बनाएंगे तो उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा पब्लिश नाम का, वो पब्लिश को क्लिक कर दीजिएगा, एक अपने आप से ही नाम जनरेट कर देगा. वो नाम हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक डिजाइन बना देता हूँ. हेल्थ केयर मेडिकल क्लिनिक चूज कर लेता हूँ, और मैं क्या क्या चीजें देना चाहता हूँ. मैं जनरल हेल्थ चेकअप देखना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन, फिजिकल एग्जाम, हेल्थ स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक्स, सर्जरी नहीं करना चाहता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन रिफिल करना चाहता हूँ, एलर्जी टेस्टिंग, वुमेन हेल्थ केयर अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, डाइटरी एंड न्यूट्रिएंट कंसल्टिंग, ये चीजें मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? हम क्या क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट भी बेचेंगे, ब्लॉग भी रखेंगे, नए कस्टमर भी लेंगे, हम सभी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. हम बोलते हैं कि भाई हमारा सारा कुछ ऑनलाइन है, तो हमें एड्रेस के ऊपर में परेशान नहीं होना पड़ेगा. इसको भी मैं इजी केयर बोल देता हूँ. इजी नेविगेशन. 3 चीजें बतानी थी. लॉयल्टी प्रोग्राम में हटा देता हूँ, अफोर्डेबल प्राइजेस रख देता हूँ. 3 फीचर सेलेक्ट करने थे. अभी मेरे ईमेल एड्रेस में, और मैं यहाँ पे DRHDD कॉम ऐड कर देता हूँ. फोन में 91919191 1 2 3 4 5. कंटिन्यू. जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हाई कॉन्ट्रास्ट वाला स्कीम ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? उनके लिए मैं, पर बहुत डार्क प्लेटफॉर्म उनको दिखता नहीं स्क्रीन में, इसीलिए मैं हाई कॉन्ट्रास्ट वाला ये स्कीम लेते हैं. ये स्कीम भी हाई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये स्कीम ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट है, तो हम इस स्कीम को लेते हैं. अब इसके अंदर में हम कलर चूज कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा रहे. मेरे ख्याल से ओरिजिनल वाले में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट था, तो मैं ओरिजिनल वाले से करता हूँ. शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए, तो मैं एकदम क्लियर शब्द वाला चूज करूंगा अपने लिए.
ये देखिए, ये उसने मेरा वेबसाइट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, और मैं इसको अब ये वेबसाइट डिजाइन ज्यादा साफ नजर आ रही है कि पहली वाली डिजाइन साफ नजर आ रही थी आप लोग को? ये डिजाइन थोड़ी ज्यादा साफ नजर आ रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, correct? Now I'll go back to my question. What is the difference in this third design? जो the process, पहले केस में easy लिया विक्स, और ये तीसरा जैसे कि आप लोग ने ही बताया था कि पहला वाला जो था उसके अंदर में it was more structural, second one was featured towards what I want to offer. What about this case? Where do you classify this one? Intent or the structure? What do you think? May I see once more? Please, the process. The pages. मैम आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस जो हमने अभी फॉलो किया ना, क्वेश्चंस के आंसर दिए। Yes, sir. तो the first one लिया, it asked about the images and other things. The second one, it asked about the features we want to keep. The third one had its own process. Okay, so first one we concluded that it was more about structure of implementation rather than what we want to implement. Second was more about what we want to implement rather than the structure. What do you think about the third one? What do you think about the third one? Do you think it was more about structure, or do you think it was more about what I want to offer? I will say neither, because what this people did was they said, okay, you want to implement something, fine, but I can provide you service only for these things. I can make a website in which certain features will be there, take it or leave it. So it is quite possible that they don't cover everything that I had to offer. They offered certain things that which I had not planned. Okay, so the first one was structural, but it was entirely based on what I said. Second was behavioral, entirely based on what I said. The third one was a mix of two, but with limited capabilities. ये तीसरा स्टाइल हो गया आपका प्रोटोटाइप का. Aesthetically very good. It is very near to your actual website. High fidelity design आपकी बनी. पर तीसरे केस में क्या है, आप जो इंटेंटेड देना चाहते थे, यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, बिकॉज जो मैकेनिज्म आप यूज कर रहे थे प्रोटोटाइपिंग करने का, वो उसको सपोर्ट नहीं करता था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जैकेट बनाता हूँ, उसके अंदर में मैं कॉम्प्लिकेटेड सा पैटर्न बनाना चाहता हूँ. अगर वो जैकेट का मटेरियल हेवी स्टिचिंग के लिए नहीं पॉसिबल होगा, तो आपका डिजाइन आप उस पर नहीं उकेर पाएंगे. ठीक है, मैं एक कार या गाड़ी का इलेक्ट्रिक चलने वाली पूरी गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाने चाहता हूँ. सस्ता होने के कारण मैं प्लास्टिक नहीं यूज कर सकता, मुझे महंगा वाला मेटल ही यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले केस में हम पूरा स्ट्रक्चर पे ध्यान था, दूसरे केस में हमारे बिहेवियर पे डिजाइन था. ये दोनों का मिक्स है, और क्योंकि दोनों का मिक्स है, दोनों ही पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं था, बट दिस रिजल्ट इज बेटर देन आइदर टू, लिटिल बेटर, क्योंकि it is kind of balance. Understood this difference, everyone? That is, It is providing a simple starting point. yes, it's more about making things start rather than reaching to the destination. So
with this, will bring this session to the end, and Satish sir had also shared the, okay, because I am logged into my account, so when I share editor, it shows me my own design. It does not show the design of Satish Kumar sir. सतीश सर, आप वहां पे एक व्यू माई वेबसाइट ऊपर, यहाँ ऊपर में जहाँ पे बन के आया था ना, यहाँ व्यू वेबसाइट है, आप उसको क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट नया पेज, नया टैब खुलेगा जहाँ ऐसा ऊपर नाम लिखा होगा। वो हमारे साथ शेयर करिए तो हमको आपके डिजाइने भी दिखेंगे आप लोगों के। Okay, so I request everyone to use, I'm going to share the name of these websites on the WhatsApp group also. Everybody must have at least 2 designs with them tomorrow. Okay. Okay, so let us thank Dr. Durga Prasad Tiwari sir. Really, it was a very nice and interactive sessions. Everything was explained very neatly and clearly. So in these sessions, the participants learn regarding the implementation of prototype design in the form of web pages, and the requirement, what are the basic requirements, and then how to design them with the website name and slogan, etc. He also explained regarding how one can monetize from the websites, and also real scenario like what type of web pages one can build a particular solution of industry or small markets. So he also explained with the help of various freely available websites to design the web page like Fix, Helia, etc. So thank you very much, sir, for today's session, and I'm confident that the participants will have got benefit from today's lecture. So thank you very much for sparing your valuable time and knowledge with us. Thank you, sir. Just before we end, a very good website from Satish sir. So as you Okay, can see, please. it's quite different from our design. It is really good to see. Before we end, I just request one thing from all the participants. Is there anything that you think we must include in our session, or which you find missing or something in our sessions, in previous 2 sessions? Not just related to topic, the way of presentation, yeah, a language usage. So don't mix Hindi and English. Just keep everything in English or keep everything in Hindi. Any comments like that? This is feedback for my prototype. Participants, please feel free to share your feedbacks. Actually, that will help the sir so that the communication may be better tomorrow. Keep everything in English. Okay. Please feel free to communicate. That's the only reason we are conducting this workshop. बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने वो नहीं शेयर किए हैं, वेबसाइट्स नहीं शेयर किए हैं। प्लीज शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच मैम। प्लीज आप लोग अपने वेबसाइट शेयर करिए। आज सुबेरे आपके वाइस चांसलर सर ने कहा है जो अच्छे प्रोटोटाइप बनाएगा उनके लिए हम प्लेटफॉर्म देंगे, फाइनेंस भी मिलेगा आप लोगों को। इसलिए प्लीज आप लोग जो बना रहे हैं उसको प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग आपको बताएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग उसका मोनेटाइजेशन कर सके। क्लासरूम पढ़ाने के अलावा ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं हम। प्लीज आप लोग सभी लोग अपनी जो वेबसाइट्स है ना, प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
आप लोग अपनी सारी वेबसाइट्स आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करिए. This makes us proud कि see what our students are doing. Please. Yes, you are correct, Dr. Tiwari. Actually, this is pre-sensitization of Ideathon 2024, right? In which you have to not only write your ideas, but you have to drive your ideas up to prototype stage also, right? And those ideas will get funded, which will have some market value, feasibility and market value, right? So I think this is pre-workshop, and everybody should prepare their web page as Tiwari sir told, and share in the WhatsApp group. बेटा आप लोग जो वेबसाइट बनाएंगे ना उसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं. प्रोटोटाइप में गलतियां होना आवश्यक है. इसलिए आप ये मत सोचिए कैसा वेबसाइट बन रहा है, क्या बन रहा है, उसके बारे में वेरी मत करिए. आप अपने आइडिया शेयर करिए. हम 100, मैं आपको पर्सनल प्रॉमिस दे रहा हूँ, जितने लोग अपने वेबसाइट शेयर करेंगे उन सभी वेबसाइट को पर्सनली देख के उसमें क्या कर सकते हैं मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा वेब ये खत्म होने के बाद भी. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके. एंड प्लीज आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा. उनको ये बताइएगा कि स्टिल देयर इज टाइम, टुमारो एंटायर डे इज देयर. ओके. अब वो लोग आके ज्वाइन करेंगे तब भी मैं उसी पॉइंट से शुरू करूंगा ताकि वो कल से भी बेनिफिट मिल जाए. ठीक है. प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोग को प्रॉम्प्ट करिए कि आके ज्वाइन करें, क्योंकि दिस इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन. And I sincerely appreciate all the effort from the students, and thank you very much for giving me a chance. So hopefully we'll all meet tomorrow morning at 11. Yes. Thank you so Thank you, very sir. much. Thank you very much. Nobody has written no questions, sir, now. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Sir, I'll leave the meeting now. Thank Yeah. you. Thank you.